Let's say that a building is on fire. In that particular case, will the firemen extinguish the fire first? Or will they ask the people around what caused the fire and who caused the fire? Of course, deal with the fire first. Deal with the fire first and then work around what was the cause of this particular fire. Now, this is the same mistake we do with our emotions. When we are highly triggered in a very strong emotional state, what do? We ask questions to ourselves. Why does it always happen to me? Why do you always do this? You always do the same thing to me. I'm sure this is going to happen even in the future. Now, what we are doing, we're trying to ask questions in a very strong emotional state. Are we going to get any logical answers here? Probably not. We are biased there. So all the answers I'm going to get in that strong emotional state are going to be biased. What should you do? Give yourself the time to reduce that intensity of fire or the intensity of the emotion. जब आग बुझ चुकी है, आपको किसी और से ज़्यादा बेटर पता होगा क्या करना है उस पॉइंट पे. It's undeniable that we all grapple with ebbs and flows of feelings. We experience a ton of emotions every day, and quite often we don't know what to do with them. We don't know how to manage them, or, not the least of all, make sure that they don't make us do anything stupid. Experts say that all emotions are important because they are signals that we need to decode in order to live a balanced life and also create conditions for thriving. Today's conversation is just about that. It's about learning to navigate our internal landscape, about understanding the nuances of emotions, and becoming emotionally intelligent. Our today's guest is Shivam, who's authored 2 books. One is called How to Unleash Your True Potential, and the other is called Finding the Magic in You. They're both exciting books. You can go get them, and the link is in the description. He's also an emotional intelligence coach, and he has personally coached hundreds of people and helped them become emotionally intelligent. Emotional intelligence has the power to transform our struggles into our strengths. Without further ado, let's dive right in. This is me and Shivam in the Find Your Ultra podcast, episode 44, Indulge Away. Hi Shivam, welcome to the Find Your Ultra podcast. Hi Vipin, thank you so much for having me. So good to see you here after so long, right? How long have we been trying to do this? I think more than a year, I guess. Yeah. Over a year, right? Yeah. And what a welcome. Like we have Dhol and Bharat in the background. Right. And they're Grand just, welcome. Yeah, exactly. They're not stopping at all. Right. So, wonderful, sir. Let's have this conversation. I'm super looking forward to this. I'll tell you why I wanted to have you as a guest and why this is important. I feel in today's times, there are a lot of things that are happening which are making our mental health not so easy to deal with. Right. And, I think emotional health is a component of mental health. And there are just so many emotions that we just don't know how to deal with because nobody teaches us how to. So the work that you're doing is commendable. And, I've been following you for a long time and I follow the content. And the random posts that I come across, like randomly they show up on my feed. The posts are not random, but they show up on my feed and they're like, I sometimes save them or share them or just take a screenshot and send it to somebody because, those nuggets are really powerful and great reminders. And they can sometimes help you deal with a situation that's going on in your life and even day to day. So, super sir, super excited to have this one. Let's begin with asking you how you are. How are you? I'm doing great. How are you doing? Good. Thank you. How was your talk today? Great. It was great. Yeah, you spoke at SRCC College, Delhi. Yes. Yeah? The topic was the same, emotional intelligence. Emotional intelligence. Yes. And it went on for an hour and a half. Yes. Yeah, well, okay. But the podcast will give them a run for their money. We'll do a longer episode. Right. But yeah, about 90 minutes for sure. So, looking forward to this, please tell me, to begin with, what's the mission that you're on and why does it matter? I think the very important thing that I want to work around, and that's what exactly drives me as a person, is helping people become aware about themselves and what exactly are the things they should be doing to be more aware of themselves. Because one thing I think, I'm an science student and I have been very inquisitively interested in science of how things work. So I did my bachelor's and master's and PhD in aerospace engineering. I've been curiously passionate about science and what exactly happens and what things happen. Aerospace engineering? Yes. I didn't know that. Okay. Right, yeah. So ideally, the thing is that if you try to understand things and why things happen in a particular way, it gives you a very lot of awareness about things and makes you deal with things in a better way. Okay. For example, if you know about gravity, it would help you deal with the basic day-to-day things in a better manner. If you don't know about gravity, everything will feel like magic. Yeah, and you'll be pissed off. Exactly. Like, why is this falling again and again? And why is this happening to me? Yeah. And why is this happening to me? Yeah.
right? Other people are maybe enjoying lives, right? Now, the important thing is that over the period of years, I realized that most of the people suffer because of lack of understanding about their own selves. And this is a very important thing to understand, because what goes inside a mind, it's a very complicated thing, obviously. No one exactly knows 100%. But what goes inside a mind, what are the emotions, what exactly are the emotions that gets triggered? How do we deal with those emotions? All those things are so inquisitively driven and driving us that we somewhere are not able to focus on those particular areas. So my goal as a writer, as an author, as a coach, or even as a speaker is always to make people aware about themselves, aware about their mind in a better way. So that is what drives me. The mission that I'm on is to make people more aware of themselves, emotionally aware, so that once they understand themselves better, they would know what exactly is happening to them and they can deal with it in a better way. Amazing. I second that. I totally agree. And mind is such a complicated beast. I'm an MBA. I've now signed up for, I've studied nutrition after that, and now I've signed up for psychology, MA in wonderful. psychology, my second master's. Yeah. So I'm also deeply inquisitive about mind and the way, why we do what we do. But the thing is, despite like even the psychologists and the therapists and emotional intelligence coaches, no matter how much you know about the mind, no matter how many things you do, you're a human, and you also struggle with the same things again and again. It's just that you have some tools that you can use to help you deal with that. But even the coaches need coaches, is what I feel, right? Absolutely. Yeah, I'm assuming you don't have it dialed in completely. Like my emotional health is always sorted. It's not like that, is it? Absolutely not. I mean, we all are human beings, and we are all going to have off days, obviously. And yes, you're right about it. We need to be more conscious and aware. And of course, I mean, certain bit of awareness and certain bit of practice and certain bit of tools definitely help us to manage it better compared to others who are not so much aware about their own mental or emotional health. So we got an edge, but doesn't make us perfect. We are still human beings, and we still know and deal with certain things in a better way. But yes, of course, trying to understand and trying to deal with it and not taking things personally is something we learn a lot, and we try to practice it upon ourselves as well. Yeah, that's something we need to all learn. Great. So what is emotional intelligence? Right. So the word itself is pretty self-explanatory, right? Emotional intelligence. Being intelligent in the way we use our emotions. But interestingly, the word emotions and the word intelligence is often not used together. Right? In our day-to-day life. I was just going to say, because when you said the way we use our emotions, we don't use our emotions. Emotions use us, right? They decide what we're doing. Exactly. Because that's what we say often, right? That if you're an emotional person, maybe you're not a logical person. If you're an emotional person, you're not an intelligent person. That's what we often say. But interestingly, like you also mentioned, emotions definitely drive us. But if you're aware of what exactly is driving, how it is driving, and what you can do to have a better management of it, that is where emotional intelligence comes into the picture. So the goal is to understand how do you respond to an emotion better rather than reacting impulsively to it. That means if you understand about your emotions, what exactly is it trying to tell you? Right. What is the signal it is trying to send you? And then choosing your response rather than letting that emotion drive your behavior or anything like that. So that is what exactly emotional intelligence is. Of course, a very broad topic. But as we talk about it, we'll get into detail as that. Sure. So instead of reaction, a response, like a thought about a calculated response, and that may become second nature if you practice these tools and stuff like over time. I've experienced this in my own life, where when I became a little more aware, I used to do awareness meditation and also Vipassana meditation. I've done a few times. So the meditation definitely teaches you how to be more self-aware. That's one tool. But, and a lot of purists of meditation would probably discount and say, everything else is bullshit. So, you do the gratitude journal and all of that. Everything else just doesn't work. The only way is to go inwards and everything. Maybe that's the ultimate thing. But that's a tool that's not accessible to everybody today. Absolutely. I mean, I may be wrong about that. It is accessible to everybody, but not everybody understands this very well. And not everybody, people can find it very, very tough to close their eyes and sit with themselves. And, there isn't enough support available around that. Yes.
it's coming. Apps and various other things are coming. So, we'll all get better at dealing with that. But there are a lot of other tools that people can use, which is the kind of stuff that you talk about. So, what's the difference between, let's understand the emotional health a little bit better. What's the difference between mental health, because mental health, emotional health, and spiritual health, because these words are interchangeably used? Right. So I think when you talk about mental health, it combines all the things about your mind, right? Everything that comes along with it. Emotions would be a part of it. Okay. That means emotions are something that is driven by the mind. And that is where a lot of things are coming to the picture. Managing your emotions, understanding your emotions. When you talk about mental health, various other bigger, broader domains also come into the picture. For example, trauma, how you deal with certain other things, and what exactly drives your behavior. So many other things that also fall under the same. Cognition, yeah. Of course, in emotions also, there are certain things of cognition and rationality and emotions and other things falling into that bracket as well. But I think mental health will be a much broader aspect of things. Emotional health will fall under the umbrella of it. Okay. About the spiritual health, again, depends on what is the definition of spirituality, because everyone kind of has their own definition of spirituality, and based on what they use and how they exactly use that definition, it would again be divided and defined with that. I agree. What's your definition of spirituality? I like I told you initially as well, that I'm a very science-driven person. So my idea of spirituality is nothing. I am not a fan or a believer of spirituality. Because I personally believe there is no spirit. I believe there is just mind. And for me, it's just mental health and emotional health, because the moment, it's a matter of belief at the end of the day, because neither I know, neither you know, right? So basically, if you believe in a spirit, if you believe in something that is driving you, a god or something like that, so naturally that will be a driving force for you. For me, I believe that there's nothing like that. It's the mind driving us. Eventually, we live for it, we die for it, and that is it for us as a human beings. So that's what I think. But again, that's a personal belief. That's depressing. But no, it's not. I'm just joking. But okay, great. I've met people who don't believe in religion, and that's understandable. And then it's the first time I'm meeting somebody who's saying they don't even believe in spirituality. I think it's a very commonly used word these days, and it's being tossed around a lot without any meaning. Everything. It just means everything and nothing. It's a bit like love and happiness. Absolutely. It's tossed around a lot without any significant meaning to it. But again, that's the thing. People have improved and worked around a lot in terms of actual spirituality. Basically, the very basic thing is diving within, understanding yourself. That's what we call spirituality, right? Yeah. So that's what exactly it is about. But again, in ways and terms it has been used so often these days, that is where the word kind of becomes very meaningless somewhere. Yeah, that's what I feel. Wonderful, sir. So thank you for sharing that. So now let's dive, you coach people about these things, right? Yes. Let's dive deeper into the emotional zone. You say all emotions are important, right? Why are they all important? Because it's easy to understand there are certain emotions that I do like and I love them, and certain emotions that we don't like, right? Generally, why are all emotions important? Why is anger important? Why is frustration and all these emotions, sadness, why are they all important? Right. That's a very good question, and I think this is the most important thing that we need to understand and make it clear first. The moment we label emotions as positive emotions or negative emotions, that is where the damage really begins. And that's what somewhere the culture is also propagating and working around. The moment you talk about hustle mindset, the moment you talk about this happiness and all the other things that we talk about, we kind of promote this idea that you need to be motivated and happy all the time. You need to be in constant state of peace all the time, which is actually humanly unrealistic. So the whole goal of understanding is that we human beings are driven by emotions all the time. And now coming back to the question that you asked as well, every emotion serves a purpose to us. So there are no positive emotions, there are no negative emotions. All the emotions serve a particular purpose. What exactly is the purpose? For example, anger. I'll give you a very simple example. Let's say that you're walking on a road and then a wild animal jumps onto you. What will your reaction be? Will you talk to that animal like a monk, or would you throw that animal away? Maybe fight and flight, and I'll try and defend myself in wherever. You'll try to throw the animal away. You'll have a lot of bodily reactions to that particular thing, and then that's how you will protect yourself. In that bodily reaction, what are the kind of changes you might notice in your body language? Oh, so what will happen is maybe my palms will start sweating, and there'll be rush of blood and more energy, I guess, to defend myself in that moment. Right. Would you pitch Or change? the other could be shrinking away and freezing in fear. Right. Let's say that's something that is the fight mode is activated, where you can actually fight that particular animal. In that case, would you have
some increase in your pitch, voice of right loudness. There will be an adrenaline rush. Yeah. There will be that energy, like you mentioned. Yeah. Our body language will become more open. Yeah. Now think about that. When you're angry at your partner or someone else, maybe your friend, are these the same things that happen to your body? Absolutely the same. Now this is the most important thing about our emotion. Anger is a protective emotion. Right? So anger tries to protect you from something. Now, interestingly, we have evolved from So you feel threatened by something. Exactly. We feel threatened by something. And the same response kicks in. Your body understands and remembers what exactly do I need to do to defend myself here. Be it fight or be it flight. Yeah. That's what we exactly do there. So when we are actually angry, we're trying to protect ourselves from a particular threat, survival instinct. Yeah. And when you're trying to protect ourselves, that particular thing kicks in, and then we're trying to use our response system. Our pitch goes high, we get angry, we become more aggressive, our body language becomes very open and very, very, very loud as well. And that's a very basic biological response to this particular thing. So now, if you try to just act impulsively by that emotion of anger, what will happen? You'll shout at that particular person. You might throw things around, or you might even act in physical abuse, which is the extreme form of things. But that is what is driving your emotions. So that is where your emotions are driving you. But let's take a roll back and let's talk about the response thing that could potentially happen. You understanding that, okay, I'm feeling something. I'm feeling angry right now. Why am I feeling angry right now? Because somewhere I feel this person has invaded my territory, which is definitely a possibility living in the world we are right now. We have so many relationships. So naturally, a lot of people are going to invade our territory, invade our boundaries as well. And we might feel threatened by this particular thing. But is that a real threat which causes a question mark to survival? Possibly not. This is where emotional intelligence comes into picture. Understanding Big that. one. Understanding that your emotions are coming for a cause. So your anger was justified here. Yeah. You felt that my identity was being questioned. You felt that my boundaries were invaded, which is a big threat to your personality and identity. Yeah. So definitely your anger is justified. But if you don't understand what exactly your anger is trying to tell you, what would you do? You'd, without any pinch of thought, you'd act upon that anger. You'll shout at that particular person. Yeah. And maybe try to do things around, which is not the right thing to do. So that is where, again, understanding this particular part of negative emotions, what we call it, comes into the picture. The same thing goes for frustration. The same thing goes for sadness. In all the other negative emotion, as we call it, they are coming with a particular purpose. The only difference that is here is that we do not try to understand what exactly they are trying to say. We first act upon it. Yeah. And then try to think why exactly it happened to us. So that is the whole difference that happens, right? Response system. And sometimes we don't even try to think why it's happened. Exactly, right. And we just act and then just wonder what's happening to our lives. Right, exactly, yeah. Okay, that's eye-opening. In the sense that, especially when someone makes us angry with something, it's not really existential threat. Absolutely. But the body's response is the same as it perceives real threat of survival, right? Whereas the times are different, there's no lion hiding in the bushes. Exactly. Right? That's crazy. So the fear center, its primary job is to protect us, like help us survive. Absolutely. There's a particular thing called amygdala hijack. I was just going to say that. Right. So amygdala hijack. So whenever you're in a very strong threatening position, your amygdala, the emotional part of the brain, actually hijacks your rational part of the brain, the prefrontal cortex. Yeah. So at that particular point of time, you cannot think. That is a very basic nature of us. Yeah. We cannot possibly think. Our brain goes shut. Yeah. And we need to just react impulsively. Yeah. And that's what we do. That's so true. Even in nutrition, I do speak to people and I tell them this, the changes that happen whenever you're stressed about something. In previous times, the stress used to be about survival most of the time, or food, right? Yes. Now there's plenty of food and there's no threats. Yeah. But these days the threat is actually just a text message from the office. Exactly. Right? When you read that message, when the body goes into survival mode, it does not, it shuts down processes that are not necessary for survival in that moment. So, for example, digestion is happening. It will be, let's say your metabolic function is good. It's the digestion is functioning properly. But when there is threat, it'll slow down. Yes. Sexual reproductive hormones will the entire system will begin to slow down and shut down. Nobody will get turned on by anything when there's a life existential threat around. True. So it's so important to understand when anger happens to us, हमारा दिमाग काम नहीं करता. It's simple terms. दिमाग काम नहीं कर रहा है. Whereas you don't, all the faculty that you have already developed goes for a toss. This just, I'm sorry, I'm just taking too long with this monologue, but this reminds me of an experience. So I was working as a project manager in a job,
client servicing and stuff like that. There was a big client, like the biggest client of our company at the time. He calls me and he just gives it to me like, you've screwed up our project. You've done wrong in this way. Who's going to pay for this? This is going to cost like lakhs of rupees. Are you going to pay for this, or is your company going to pay for this, and what? And I just froze. My reactions were like, I'm sorry. And then I spoke with my boss later, who was a great person. And he took me to a room after that and he said, let's sit down. He said, every time this happens, imagine there is a sheet of plastic between you and the speaker, right? And you're not able to, what they're saying. But you don't have to respond. Don't respond. Let them let it all out. And then when you put that sheet in that little space that you get, maybe 1 minute or whatever, all the experience of your life, all the agency that you have, all the wisdom that you have gained, whatever little it is, will come back to you, and you'll be able to respond to that person better. And you may not even need to say sorry. Exactly. You may just need to investigate the thing and say, it turned out later. It wasn't even our fault. Like, आप apologize करके सब कुछ अपना लेट गए उसके आगे कि भाई हमारी गलती है, I'm sorry, without even knowing. He said, people are losing it. You don't have to. Right. You can control what you're doing. Absolutely. It's such an important skill for that matter, that understanding how to differentiate and how to not take it so personally like we generally do. Of course, the whole mechanism is developed that way, that you have to take ownership of certain things, because आपको बोला जा रहा है तो constantly आपका दिमाग नहीं चलेगा उस पॉइंट पे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे रिएक्ट करना है. But yes, that's a skill that we should all learn. Yeah. But now that we are on it, how do we develop that skill? Yeah, I think it comes with practice. It's a skill that takes time. It comes with practice, but it's something that has to be consistent. Like, so when somebody calls you and shouts at you or gives you a bad news or whatever, and you feel like reacting and whatnot, what is the skill that we should develop over time? What should be the response? What's the best way of handling it? Right. So I'll give you a very small analogy for this particular thing. Let's say that a building is on fire. In that particular case, will the firemen extinguish the fire first? Or will they ask the people around what caused the fire and who caused the fire? Of course, deal with the fire first. And then work around what was the cause of this particular fire. Now, this is the same mistake we do with our emotions. When we are highly triggered in a very strong emotional state, what do? We ask questions to ourselves. Why does it always happen to me? Why do you always do this? You always do the same thing to me. I'm sure this is going to happen even in the future. Now, what we are doing, we're trying to ask questions in a very strong emotional state. Are we going to get any logical answers here? Probably not. We are biased there. Yeah. So all the answers I'm going to get in that strong emotional state are going to be biased. So the very first thing understanding is that the moment you're in a very strong threatening position, that would be anything, it is going to take you on a toss. That means you would not have the logical capacity to understand things and observe things or even work around those particular things. What should you do? Give yourself the time to reduce that intensity of fire. Or the intensity of the emotion. Very small practices, like trying to bring yourself back to the present moment. Because in special moments like that, triggered moments like that, the very first thing that happens, our brain dissociates into the future or the past. Yeah. It constantly just gathers evidence from पहले क्या हुआ था, आगे क्या होने वाला. Exactly. वो panic में चला जाता है, and it constantly tries to run from this to this. पहला moment खुद को present moment में लेकर आओ. Okay, this is where I am safe right now. Of course, चीजें हैं manage करने वाली, but currently I'm safe because, like I mentioned, it's a survival mechanism for the brain to actually react in a particular way. पहले खुद को दिमाग दिखाओ कि I'm here right now. I'm safe. That is one of the things that you can do. Very small activities like breathing, deep breathing also helps to focus on this. Okay, I'm fine. Because the moment you work on the physiology of things, the psychology also tries to work around, वो भी change होना चालू होता है. So very small things, working on the body language, maybe making it better, or secondly trying to focus on deep breathing, or maybe trying to bring yourself back to the present moment, they help a lot to reduce the intensity of the emotion. जब आग बुझ चुकी है, आपको किसी और से ज़्यादा better पता होगा क्या करना है उस point पे. No one else can give you the advice on that. Superb, sir. Superb. I think I've heard Tim Ferriss also say this exact same thing. He says, I remind myself of this when situation like that happens. The first thing I tell myself is, I'm safe. It just, इस तरह की बातें सुनने में बड़ी वैसी लगती हैं. But if you can do that, like if you can remind yourself that yeah, you're safe. Like you're safe. You'll get through this. You'll get through this. That's a good assurance and good starting point. Yes. अब देखते हैं क्या करना है. Exactly. Right? Yes. Right. Wonderful, sir. Wonderful. Sir, so how does so let's say somebody suffers from anger issues. Anger gets out of control. What would be your advice to deal with it? There are two ways to look at this and two kinds of angers. One is relationship based, and it could be work or it could be personal, like home relationships, or it could be the other one,
I want to talk about relationships separately. So let's address the anger with self. Perpetually being in a state of unhappiness and anger with yourself. All the decisions you made are wrong. Everything. Where are you in life? And that voice in the head. How does one deal with the anger towards self? Right. In most of the cases, that anger comes from two reasons. Firstly, या तो हमें बचपन से बता दिया गया है कि anger is a bad thing. And you should not actually be angry at anyone. तो बचपन से चीज़ें क्या होती है ना, यू कॉन्स्टेंटली हियर दैट कि यू आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, बहुत गुस्सा आता है तुम्हें, बहुत फालतू चीज़ पे गुस्सा करते हो. तो समवेयर दिमाग में बैठा दी गई बात को कि तुम्हें गुस्सा नहीं करना है ना. एक इंटरेस्टिंग चीज़ होता है जब आपको बार बार बोला जाता है ना, यू डोंट हैव टू बी एंग्री, यू आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, दिस एंड दैट, देन यू ट्राई टू सप्रेस योर एंगर. यू स्टार्ट लर्निंग हाउ टू सप्रेस योर एंगर, बट इट कम्स विद अ कॉस्ट. इट कम्स विद द कॉस्ट ऑफ सप्रेसिंग योर नीड्स एज वेल. मुझे बुरा लग रहा है बट मैं सुन लूँगा, बिकॉज गुस्सा करना बुरी बात है, राइट? तो मैं आज सुन लूँगा, फिर कल आप कुछ मुझे बोलोगे, फिर मैं सुन लूँगा, फिर आप कुछ बोलोगे, फिर मैं सुन लूँगा. 10 दिन तक मैं सुनता रहूँगा. 11वें दिन आप बहुत छोटी सी बात बोलोगे, मैं फट जाऊँगा. Because you've been storing it. Exactly. So I'm compiling all this previous anger and then putting it all out in just one particular day. So this is the biggest reason of that particular thing. गुस्सा जो सेकंड वाली बात आती है कि हम काफ़ी बार उस तरीके से चीज़ों को डील करते हैं, पुश करते हैं, हम काफ़ी दिन तक चीज़ों को कंपाइल करते रहते हैं और इवेंचुअली वो फट के बाहर आता है. एंड बिगेस्ट रीज़न इज दैट कि हमें बचपन से बताया गया कि तुम्हारा गुस्सा गलत है, गलत गुस्से को नहीं एक्सप्रेस करना चाहिए. गलत बताया गया है इसलिए हम सप्रेस करते हैं एंड दैट देन लीड्स टू piling it up and then eventually taking it all out all at once. और the other reason जो हमने बात करी regarding angry towards ourselves, कि हम खुद से गुस्सा है, खुद से नाराज़ है, अगेन वो पाइल अप होता है. हमने एक सेट ऑफ आइडियल्स बना लिया खुद के लिए, एक बिलीफ सिस्टम बना लिया दैट आई शुड बी अचीविंग दिस टू बी एबल टू कॉल्ड वर्दी इन लाइफ. अब वो वर्दी का डेफिनेशन कहाँ से आया? हमने सुना में भी बचपन में लोगों से, या कंपैरिजन सेट, कंपैरिजन. एग्जैक्टली, कंपैरिजन भी एक्चुअली इसी का बाई प्रोडक्ट है ना, जो सुना हमने. होता क्या है ना कि आपके एक आइडियल सेट हो गया होता है कि दिस इज व्हाट डिफाइंस योर वर्थ. इट कुड बी मनी, इट कुड बी पावर, इट कुड बी फेम, इट कुड बी करियर, इट कुड बी जस्ट एनीथिंग. उस तरीके से हम ड्राइव होते हैं और उस आइडियल को हमने पर्टिकुलर चीज़ पे बैठा लिया होता है. अब वो आइडियल को हम चेज कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली. आई नीड टू अचीव दिस मच इन लाइफ टू बी कॉल्ड वर्दी. लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि हम उस चीज़ को इतना ज़्यादा चेस करना चालू कर देते हैं कि हमें पता नहीं होता कि वो रियलिस्टिक भी है या अनरियलिस्टिक है. सो व्हाट वी डू, वी कीप ऑन चेजिंग एन अनरियलिस्टिक गोल. द मोमेंट वी कीप ऑन चेजिंग एन अनरियलिस्टिक गोल ऑल द टाइम, वी आर नेवर एबल टू अचीव दिस. वी आर नेवर एबल टू रीच परफेक्शन फॉर दैट मैटर. परफेक्शन रीच नहीं कर पा रहे, तो हर बार क्या हो रहा है, वो थोड़ा मिस आउट हो जा रहा है. एंड वो मेरे इंटरनल कोर बिलीफ को अबाउट अनवर्दीनेस कि यार आई एम नॉट वर्दी इनफ बार बार ट्रिगर कर रहा है, बार बार एस्केलेट कर रहा है. तो ऑल द टाइम जितनी बार वो चीज़ें हो रही है उतनी बार वो एस्केलेट होता बढ़ता जा रहा है. सो ज़िंदगी भर हम इसी बिलीव के साथ बिताते जाते हैं और ज़िंदगी भर जब वो चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हो रही है, मेरा गुस्सा खुद के प्रति बढ़ता जा रहा है. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आई एम फीलिंग दैट आई एम नॉट डूइंग इनफ, आई एम नॉट वर्दी इनफ. तो वो गुस्सा, जो रिजेंटमेंट की बात करो, गुस्सा की बात करो, दैट फीलिंग दैट कुछ कमी है, कुछ आई एम नॉट बीइंग केपेबल ऑफ व्हाट एग्जैक्टली आई शुड बी डूइंग. मे बी मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ लाइफ में बट मैं नहीं कर पा रहा हूँ. तो वो सारा जो स्ट्रेस एंड बर्डन होता है ना, वो इंटरनलाइज होना चालू हो जाता है. दैट्स वेयर इट एक्चुअली कम्स आउट एज. तो अंडरस्टैंडिंग दैट पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइट, बट हाउ डज वन डिफाइन रियलिस्टिक और अनरियलिस्टिक? लाइक it's a very tricky ideals that we see and set around. Let's say a friend has achieved a certain goal, and if I feel that it's unrealistic for me, then that may not also be correct, right? So, right, yeah, exactly. I'll give a very simple example. Let's say that you have studied in Delhi, right? आपने स्कूलिंग दिल्ली से करी है, मैंने स्कूलिंग एक छोटे स्मॉल टाउन से करी है. हम एक कॉलेज में मिलते हैं, राइट? अब सिंस यू हैव स्टडीड इन दिल्ली, you have got a head start in certain aspects of life because you have been exposed to bigger environments, better communication, maybe better way of looking at people, maybe बहुत सारी better चीज़ों में. मैं एक स्मॉल टाउन से आता हूँ तो मैंने पढ़ाई की है और कुछ नहीं किया ज़िंदगी में. अब हम मिलते कॉलेज में. Now I see you doing a lot of good things in life. You are playing a guitar, you are going for MUNs, you are going for seminars, workshops, running ultra marathons and doing a lot of great things in life. Right? You have a girlfriend, you are getting good grades in examination as well. And I'm just getting good grades in examination. और कुछ नहीं कर पा रहा हूँ मैं. Now मैं कंपेयर करता हूँ कि यार ये बंदा सब कुछ कर पा रहा है, मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तो बस नंबर लेके आ रहा हूँ, वो भी सही से नहीं आ रहा है, वो भी मैं नहीं ला पा रहा हूँ उतने अच्छे से मार्क्स. अब हो क्या रहा है यहाँ पे? मैंने कंपैरिजन किया खुद का कि इफ़ यू कैन डू दिस, व्हाई कांट आई? विच इज़ फेयर. आई मीन जेन्युइन बात है, गलत बात है, क्वेश्चन नहीं कहीं से भी. बट क्वेश्चन का पॉइंट क्या आता है कि मैंने जब कंपेयर किया इस चीज़ को कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ जो आप कर पा रहे हो, क्वेश्चन वैलिड है, बट द आंसर
आई एम नॉट रेडी टू एक्चुअली अंडरस्टैंड द रियल आंसर टू इट, बिकॉज जो हेड स्टार्ट आपको मिला था, किक स्टार्ट आपको मिला था, वो मुझे नहीं मिला है. तो वो जो आपको 4 साल में भी आपने वो जो जर्नी 8 क्लास से स्टार्ट किया था, वो मैं अभी इंजीनियरिंग में स्टार्ट कर रहा हूँ, अपने कॉलेज में स्टार्ट कर रहा हूँ 4 साल बाद. तो मुझे भी वक्त लगेगा वहाँ तक पहुँचने में जहाँ आप पहुँच चुके ऑलरेडी. जब मैं कंपेयर करूँ अपनी जर्नी को एक दूसरे के साथ, व्हाट एम आई फीलिंग, आई एम वर्थलेस. मेरा कोई मतलब मोटिव ही नहीं है. नो, दैट इज व्हाट आई कॉल रियलिस्टिक ऑन रियलिस्टिक. मैं खुद को एक गोल देता हूँ, जाओ उससे बात करके आओ, जाओ ये मैराथन भागो, जाओ यहाँ पे इस वर्कशॉप में, जाओ ये M1 ज्वाइन करो. अच्छी बात है, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए. बट कैन आई बी एज गुड एज यू? प्रॉब्ली नॉट. इट माइट टेक मी टाइम, आई विल गेट देयर एज वेल, बट थोड़ा वक्त लगेगा मुझे. बट मैं खुद को समय देने के लिए रेडी हूँ नहीं, बिकॉज मैं पहले ही जज कर रहा हूँ खुद को कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ. दैट इज वॉट इज अनरियलिस्टिक एंड अनरियलिस्टिक. अंडरस्टैंडिंग कि आप किस पॉइंट पे खड़े हो अपनी जर्नी के हिसाब से, और आप कितना अचीव कर सकते हो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे. एंड वी ऑल हैव सर्टेन स्किल्स जो हम कॉन्स्टेंटली हमारा बेटर है. आई कुड बी बेटर इन वेरियस थिंग्स देन यू, एंड यू बेटर इन वेरियस थिंग्स देन मी. तो वो अपनी अपनी स्किल्स है जो हम समझना जरूरी है, वो हम मिस आउट कर जाते हैं काफ़ी बार. I totally agree, and also the fact that when you're comparing two lives, they're just very different lives in every aspect. So the example that you've given, like four years head start, उसके बावजूद भी the kind of motivations this person has had, उनके क्या motivations थे और क्या driving factors हैं और वो क्या achieve करना चाह रहे हैं. They may be trying to achieve actually something very different from where they are, and they may not be happy with it either. You are looking at it and just like salivating कि ये ideal है, and look he's achieved. They've not achieved. They're probably also striving. Yes, so true. it's just a very unfair way. And even the like an example somebody gave me very early in life was, if you want, let's say, a Ranveer Singh's body, you can't live a Vipin's life and have a Ranveer Singh's body. Absolutely. You have to, like, you know, live that life. Exactly. And then once you know what it involves, are you willing to make those sacrifices? Yes. It's just, I want to be me, I want to walk on this path, but on this path I want Ambani's money, and this guy's body, and that guy's whatever relationship status, and so, you know, we want a good chunks only. So this, the comparison only just makes you, it's a you know, very fertile ground for unhappiness and dissatisfaction. Absolutely. Yeah. Wonderful, sir. What a lovely conversation. I'm loving it. So point very well addressed. But let's say somebody who feels that they are not comparing themselves with anybody. It could be that they've not done the self-examination very well, but whatever it is, for any reason they're feeling they're not comparing themselves with anybody. They're just unhappy with their own life choices and life circumstances, and that leads to anger and frustration, anger on the self. Yes. How does one deal with that? I think, like you mentioned, the self-examination part, that has a very important role to play, because काफ़ी बार चीज़ें वहीं से आती है. But other factors also come into the picture. Maybe the conditioning, maybe some impact of trauma, और अदर फैक्टर जिस कारण से हम वहाँ पर उस तरीके से सोच रहे हैं. डिससेटिस्फैक्शन कॉन्स्टेंटली आ रही है, और इवन द फिजियोलॉजिकल लेवल्स एज वेल. जो डिससेटिस्फैक्शन, एंगर है, काफ़ी बार हमारे हार्मोन्स इन ट्यून नहीं है, राइट, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस. अगेन वो आ रहा है उधर से ही, बट हाँ, फिर भी काफ़ी बार उसका भी इम्पैक्ट होता है हमारे मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ पे भी. सो लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स कम इनटू द पिक्चर. बट येस, दैट सेल्फ एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज काफ़ी बार घूम फिर के बात वहीं पहुंच जाती है. हाउ डू वी सी आवरसेल्व्स? So before you talk about that, and that's an important one, what you just mentioned about, it could be hormones, and even hormones are affected to a great extent by what we eat, nutrition, and the way movement, right? In fact, I was talking to a nutritionist, and she was telling me that there are various issues that can happen. Hormones can go for a toss depending on what you're eating and the way you're working out or not working out, and sometimes. And mental health can, you know, have an effect on the way you're eating and your hunger and fullness cues and everything. So it works both ways. Absolutely. And so I was asking, the question I asked her was whether you should visit a psychologist first to see whether it's the mental health causing the issues with the nutrition, and or it is the other way around, which is bad nutrition causing bad emotions and mental health. It could just be either. And we people don't usually connect the two. Yes. If you and awareness will get you there. If you do pay attention to what you like, maybe you've not eaten all day, or maybe anybody is not fat adapted or keto adapted or whatever. Maybe it's the food. Maybe last night you had too much junk or whatever it is, and that's just making you angry. But how does one go about awareness, like you were talking about self-awareness? Right. I think that's the most important part. That, like you mentioned, understanding that whole impact of physiology and psychology and dependency on each other is very, very important. And I think either part you choose, the moment you start working on either of the things, you will start to see effects and results as well, and that will help you to become more inquisitive of the other part as well. For example, आपने खाना अच्छा किया,
वर्किंग आउट अच्छा किया, आपको मेंटल हेल्थ सही लग रहा है, अब आप क्वेश्चन करोगे क्या हुआ ऐसा डिफरेंस. सो मे बी वहाँ से एक पार्ट चालू हो सकता है. और इवन द सेम थिंग वो मेंटल हेल्थ एज वेल. यू स्टार्ट टू फील बेटर, यू स्टार्ट टू वर्क ऑन सर्टन एरियाज, एंड सेम थिंग यूड वांट टू अप्लाई ऑन द फिजिकल हेल्थ एज वेल. तो बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. कहीं से भी स्टार्ट करो, ग्रेट थिंग, बट स्टार्ट कहीं से भी स्टार्ट करो पर करो. हाँ, एग्जैक्टली. And you may arrive at the answer. Right, exactly. Yeah. Wonderful. But let's dive a little deeper into the self-examination bit. What are the questions that one should ask, or what should one do to like become more self-aware to get a hang of what's going on? Right. I think the very what's making me angry. Right, exactly. I think the very first thing we should try to understand is understand yourself better. Know yourself better. Like I mentioned the very first thing as well, कि हम काफ़ी बार जानते नहीं कि हम कौन है. What are the things that drive me? What exactly is going inside my mind? और मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या नहीं चाहिए. हम कर तो बहुत कुछ रहे. मैंने गाड़ी ले ली, मुझे मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाकर, मुझे दिखाने में अच्छा लग रहा है, पोस्ट करने में अच्छा लग रहा है, बट क्या ये मुझे चाहिए था क्या? या फिर मैं सिर्फ ये इंस्टाग्राम के लिए कर रहा हूँ बिकॉज मेरे सर्कल में लोग कर रहे हैं ये चीज़ को. डिड आई रियली वांट दिस पर्टिकुलर कार और नॉट? नहीं पता मुझे. Are your goals really your own? हाँ, एग्जैक्टली. तो ये चीज़ अवेयरनेस बताती है कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए. आइडियली वो सारी चीज़ें बोरोड ही होंगी, मे बी फ्रॉम योर कंडीशनिंग और मे बी फ्रॉम अदर थिंग्स. सोसाइटी हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज अंडरस्टैंडिंग कितना पार्ट उसमें आपका है. अगर मेजॉरिटी लोगों का आप नोटिस करोगे, मेजॉरिटी परसेंटेज इज ड्रिवन बाई अदर्स, minority is driven by yourself. The more you become aware, majority becomes about you, minority becomes others, because society में रह रहे हैं तो importance और impact पड़ना ही पड़ना है. हम उसको minimize नहीं कर सकते. But yes, awareness के साथ we can work around those things. But again, how to start that awareness process? Start with the understanding yourself better, knowing yourself better. How to do that? Read books, understand what exactly is going, emotions क्या होता है, brain क्या होता है, psychology क्या होता है, get details about what exactly is happening, journal things, लिखो अपने बारे में, सोचो अपने बारे में, समझो, अपने साथ थोड़ा वक्त बिताओ. बिकॉज आज का जो डेट है हमारे पास ऑप्शंस है अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए. बहुत ऑप्शंस है. हम जैसे when we were kids हमारे पास नहीं होता था ऑप्शंस, बैठना पड़ता था खुद के साथ. तो अब नहीं है ऑप्शंस. अब चाहोगे तो आप 24/7 खुद को बिजी रख सकते हो इन सर्टेन एरियाज, अच्छे से रख सकते हो बिजी, लेकिन इट्स नॉट हेल्पिंग द कॉज. वो आपको और डेविएट करा रहा है उन चीज़ों पे. तो ट्राई टू फिगर आउट सर्टेन टाइम्स फॉर योरसेल्फ कि आप खुद को ये चीज़ें करो. द वेरी इंटरेस्टिंग कोट आई रेड अ फ्यू डेज बैक कि इफ़ यू आर अ पर्सन हु इज़ मॉडरेटली बिजी, देन ट्राई टू स्पेंड 10 minutes ऑन योरसेल्फ एवरी डे. बट इफ यू आर अ पर्सन हु इज़ वेरी बिजी, try to spend an hour on yourself every day. Right? Because you need that more. Amazing. Yeah, what a quote. Yeah. So it's a very interesting thing कि आपको खुद के जब तक टाइम स्पेंड नहीं करोगे खुद के साथ, जर्नलिंग के थ्रू, थिंकिंग के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू, और सर्टेन अदर एरियाज, यू नॉट गेट आंसर्स. एंड दैट्स नॉट अ वन डे आंसर कि मैंने आपको चिपका दिया ये लो मैनुअल आपका लाइफ का, दिस इज हाउ यू गोइंग टू वर्क. इट्स डीप वर्क, इट्स हार्ड वर्क, एंड इट टेक्स टाइम. तो आपको पेशेंस होना भी ज़रूरी है. आपको कोई मैनुअल नहीं पकड़ा सकता कि ये हो आप और इस तरीके से आप काम करने वाले हो इवेंचुअली इन द फ्यूचर एज वेल. सो हैविंग द पेशेंस टू कॉन्स्टेंटली अंडरस्टैंड योरसेल्फ, लर्न अबाउट योरसेल्फ, अनलर्न अबाउट योरसेल्फ, एंड देन सी योरसेल्फ इवॉल्विंग थ्रू दैट एज वेल. आपने जो खुद के बारे में समझा आज 1 साल में, अगले साल आप चेंज हो चुके हो उसी चीज़ में, बट अंडरस्टैंडिंग एंड बीइंग कॉन्शियस ऑफ दैट एज वेल. सो इट्स अ डीप वर्क, इट्स इनर वर्क, but it comes with first understanding yourself, and then comes with using that understanding to work on yourself and implement on yourself as well. So that is something that really works a lot. It's fascinating. I've been at this journey for a few years, and I you know, everything that you mentioned, I can connect to that so well. Even if you're like whatever you're tracking in your life and whatever journaling you're doing. That's a journey, right? So एक journal आपने लिख के भर दिए एक साल. That's your life. You've documented your emotions, and you're able to see how you're progressing or not progressing, and then you evaluate what's working and what's not. Yes. So it's so much so important to be aware. I think awareness is the answer to all of this. Yes. Yeah. And the quote that you talked about, what was that again? Just say it. Right. If you are moderately busy, try to spend 10 minutes on yourself every day, and if you're very busy, try to spend an hour on yourself every day. Right. So they say that for meditation as well, the same thing. They say people say I can't meditate. Right, so that's precisely the reason you need to meditate. If you can't, because if you can't focus, then you know precisely the reason you need to do it. But in certain cases, it's almost like please, I'll tell you. No, I was just saying. In certain cases, it's almost like saying I can't bathe because I'm too dirty. Because that's exactly what meditation is going to solve for you. Right, but in certain cases, what we have noticed and what we have observed as well is that when you are dealing with something very strong and very traumatic, meditation actually does worse for you than good. Because what you're trying to do, you're trying to sit with yourself with a very chaotic thoughts that is not sorted. No matter how hard you try, you cannot sort it on your own.
You need to first work on finding ways to, maybe through professional help, through psychiatric help, or whatever that could be, so that you are able to sit with that particular thing. Otherwise, if you start meditation with that particular thought pattern, chances that it will do more damage than good. And that's what happens in most people as well. Yeah. Especially if you're a beginner. Yes. Like, if you're, let's say, a pro who's been doing Vipassana for 10 years. That is a different thing altogether. You know how to get into the zone. Exactly. But most of us are not that pros Absolutely. in meditation. Absolutely. So, point well taken. Yeah. Great, sir. Shivam, low-level anxiety, like, I don't know whether that's a technical term, but there's something that keeps bothering you, that makes you keep snapping at people, and you always, that feeling of, one thing after another has to happen, like this is not done, that's not done, and something that keeps bothering you just a little bit constantly, 24/7. Right. And which is why you're not even the best person when you come back home to your family, and you're not the best father, you're not the best husband. How does one deal with that? Right. I think anxiety समझना बहुत ज़रूरी है कि एक तो you could have an anxiety disorder. जो अलग ही लेवल पे we need to figure out again with a psychiatrist or psychologist to understand what exactly is the diagnosis for that. But when we talk about anxiety जो हम normal level पे normal days में हम खुद से deal करते हैं, which is very natural for every human being. Understanding that anxiety is always driven by uncertainty. What is uncertainty? Not knowing the answer. So our brain, like हमने बात की survival mechanism की, survival instinct is a very important thing for the brain. So जब तक brain survival instinct के लिए क्या चाहिए उसे? Certainty चाहिए, comfort चाहिए. आप एक जगह बैठे हो, आपको पता होना चाहिए कि मैं सेफ हूँ यहाँ पर, तो आपका दिमाग शांति से मस्त रहेगा. बट अगर उसे डाउट है, शेर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, आई डोंट नो दैट येट, आई कैन नॉट लिव इन पीस. राइट. मैं केव के अंदर बैठा हुआ हूँ और शेर आसपास बाहर घूम रहा है, मुझे नींद नहीं आएगी. So uncertainty gives you anxiety. Uncertainty gives anxiety. Now exactly कि अगर आपने इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू का रिजल्ट एक हफ्ते बाद आने वाला है. राइट. अब आप कितना सोच लो, कितना पैनिक कर लो, कितनी भी एंग्शियस हो लो, रिजल्ट एक हफ्ते बाद ही आने वाला है. लेकिन हम उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, ज़्यादा एंशियस होते रहेंगे. सो बेसिकली थिंक इज द मोर टाइम वी स्पेंड विद दैट अनसर्टेनिटी, द मोर वी गेट एंशियस. अंडरस्टैंडिंग दैट पर्टिकुलर थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कि अनसर्टेनिटी इज ऑलवेज ड्राइविंग दैट एंग्जाइटी. तो ट्राइंग टू ऑल्सो रेगुलेट क्या चीज़ें मेरे कंट्रोल में, क्या चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है. Trying to understand and bifurcate that particular thing is very very important. For a lot of people it becomes very difficult because उन्होंने वो स्किल सीखा नहीं है कभी, because हमने थॉट पैटर्न कभी नोटिस नहीं किया खुद का, या ऑब्जर्व नहीं किया. तो हम कॉन्स्टेंटली आदत हो चुकी है जो चीज़ें हम कंट्रोल में उनके बारे में सीख करना. बिकम्स अ पार्ट ऑफ सेल्फ सबोटाज मैकेनिज्म फॉर आवर ब्रेन एट टाइम्स, और मे बी सम सॉर्ट ऑफ डायग्नोसिस दैट वी हैव टू वर्क अराउंड एज वेल. बट या इंपॉर्टेंट है समझना उस चीज़ को कि हम कितना उस चीज़ को सीख कर रहे हो, कितना ज़्यादा फीड कर रहे हैं अपने दिमाग को उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में. द मोर वी आर रनिंग आफ्टर दैट पर्टिकुलर अनसर्टेनिटी, वो चीज़ आ जाता है. और इंटरेस्टिंगली क्या होता है ना कि हमें लगता है कि लेट्स से कि इंटरव्यू का रिजल्ट आने वाले एक हफ्ते बाद, तो हमें लग रहा है कि माई वर्ल्ड विल गो बैड एंड दिस एंड दैट, बहुत बुरा हो जाएगा लाइफ में अगर इंटरव्यू नहीं होता है. हम ये थॉट्स आ रहे हैं दिमाग में. फनीली जब आपका रिजल्ट आ जाएगा और आपका होता है या नहीं होता है, दोनों केसेस में आपकी एंग्जाइटी चली जाएगी. यस, अच्छा होगा या बुरा होगा, कुछ होगा, बट एंग्जाइटी इज जस्ट dependent on the point till the point you have not got the result. The moment you got the result, yes, you might feel happy or sad. Anxiety won't no longer be there because you've got the answer, you've got the certainty. अच्छा हुआ, चलो अच्छी बात हो गया, नहीं वो ठीक है, कोई बात नहीं, I'll be sad for a day and I'll be getting over it. तो जिस दिमाग, जिस certainty और जिस मैग्नीट्यूड से हम एक्सट्रीम सोच रहे थे, वो अब नहीं सोच रहे. अब ठीक है, हम डील करना भी सीख चुके हैं उससे एक दिन के अंदर, बट हम उस एक्सट्रीम पे चले जा रहे हैं बिकॉज आई एम अनसर्टेन अबाउट व्हाट इज पॉसिबिलिटी गोइंग टू हैपन, बिकॉज हम इंटेंसिटी इतनी इंडिसाइड है कि वी आर काइंड ऑफ थिंकिंग अबाउट ऑल द पॉसिबल सिनेरियोज. सो दैट्स व्हाट मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट एंड डिफरेंट. Incredible. So it's all, a lot of it is in our imagination as well, while we are waiting for things to happen. Absolutely, yes. A quote I remember from the Netflix series that I saw, I think Afterlife, Ricky Gervais. It says, I have had a lot of problems in my life. Most of them have never come true. Right. Yeah. Great. So anxiety is associated with uncertainty, you say, but the entire life is uncertain. Absolutely. So it's an important skill to develop, to learn how to deal with anxiety. Absolutely. That's the thing, right? अगर आपसे पूछा जाए कि have you thought about death? This is not a beer biceps podcast. Yeah, exactly. But have you thought about death? तो एक सिंपल सा थॉट आएगा, हम नहीं सोचते उस बारे में. बट रियलिटी इज वेरी वेरी इनक्रेडिबली डिप्रेसिंग थॉट. अगर आपसे पूछा जाए कि आप सोचने बैठ जाओ डेथ के बारे में आज, क्या होगा आपके साथ? आप कुछ नहीं कर पाओगे. यू विल बी डिप्रेस्ड, यू वोंट बी एबल टू मूव. की क्या ही मतलब है ज़िंदगी का? अगर मरना ही है तो क्यों सोचना, कुछ मेहनत ही क्यों करना, कुछ भी क्यों करना? तो हम क्या बोलते, जब होगा देखा जाएगा. सो वी कीप ऑन पुशिंग इट, जब होगा देखा जाएगा. अभी क्या है, अभी लाइफ है, अभी फोकस करते हैं इस पर्टिकुलर चीज़ पे. सो व्हाट इज लाइफ ड्रिवन बाई? लाइफ इज ड्रिवन बाई होप.
So yes, life is very uncertain for every human being, but we don't focus on that uncertain aspect. We focus on the certainty, life. Right. But another way to look at this is, and that's a discussion I have often with my wife, especially when somebody passes. So somebody, आपने देखा होगा tent लगा हुआ है. Somebody passed a couple of days ago in our street. Another way to look at this is, like, I have this conversation with her often, and what she believes, every time we talk about death, and she's like, nahi baat karni, I don't want to talk about it, because she can't handle it. But I say it's a great thing to talk about, because it's a certainty in one way, like it will come for sure. Absolutely. And then I find it very liberating. I find it very liberating that one day it'll all be over, and that makes life even more special. Just the reminder that life is limited, it makes every day so much more special. Like, even fights can end. Like my fights end the moment I'm reminded of this by somebody, or some quote or something, that this is finite, and one day the person you're fighting with fighting with is not going to be there. It's liberating, I feel, in that way. Absolutely. The way you look at it matters. The way you look at it matters. Totally. Wonderful, sir. So, what can somebody do to deal with anxiety? You say certainty to la nahi sakte hain hum, right? But when anxiety happens and when it's unexamined, one thing you would say is examine it and try and get to the bottom of it, of the source of it. Yes. What can somebody do? What should be the... Remind yourself constantly of the things that are in your control rather than things that are out of your control. काफी बार आदत पड़ जाती है हमें, like I mentioned, कि उन्हीं चीज़ों को हम बार बार सोचना जो हमारे कंट्रोल में है नहीं. फॉर एग्जाम्पल 7 दिन बचे इंटरव्यू रिजल्ट के, मैं सिर्फ यही सोच रहा हूँ क्या होगा. मेरे सोचने से कुछ नहीं होने वाला. वट आई कैन पॉसिबली डू, ये 7 दिन है, हम कुछ नहीं कर सकते. मे बी कैन नॉट लुक फॉर द जॉब ईदर. वट आई डू, मे बी watch Netflix, I'll read books, I'll go out with friends. यही कर सकते हैं. यही that is see clarity on what's within your sphere of influence and what's not. Yes, exactly. So जिसको influence आप नहीं कर सकते, उसके बारे में सोच के फायदा नहीं है. Like, अगर ठीक है, anxiety incessant है, कम नहीं हो रही है, रुक नहीं रही है. So you're saying get out of the zone of what's not in your control. पहले तो ये कर लो, which could easily be by taking some action towards something that could be in your control. Right. Absolutely. Wonderful. But even for the things like ये बात हमारे लिए, a person who's not going through maybe a diagnosis or like a mental disorder, for like say OCD की बात करते हैं, उनके लिए थॉट इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होगा कि क्या मेरे कंट्रोल में, नहीं सोच पा रहे वो लोग, नहीं इंप्लीमेंट कर पा रहे. बट येस, फॉर नॉर्मल ऑडियंस, अगर नॉट नॉर्मल ऑडियंस बट फॉर एनी अदर पीपल जो उसके थ्रू नहीं जा रहे, उनको समझना है कि हाँ, अगर मेरी एंग्जाइटी ऊपर नीचे लेवल पे जा रही है, देन येस, फोकसिंग ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग डेफिनेटली हेल्प्स, कि मेरे कंट्रोल में क्या चीज़ें कर सकते, बिकॉज ऑफ एक्शन कीप्स यू मूविंग, एंड थ्रू एक्शन यू आल्सो रिड्यूस एंग्जाइटी. And action changes your state of mind. Like, absolutely, reduces anxiety. Right. Yeah, and also thoughts actually follow action, they say, as opposed to the other way around. कि motivation आएगा तो कुछ करेंगे. Yes. If you take a small action, then that builds, and it also changes your state of mind. Great, sir. What a conversation. Thank you. Let's do some reverse psychology here and invert things a little bit. And if somebody were to, just to understand emotional health better, if somebody were to destroy their emotional health completely, if that's the goal, like ruin it, what should they be doing? The very first thing they should be doing is suppressing their emotions. Matter नहीं करता. अच्छा. Number 1. Number 2, chase certain unrealistic mindset goals. Like थोड़ा इनको समझा दो. Suppress करना है अपने emotions. So that anybody listening becomes a pro at destroying their emotional health. Let's do that, right? Absolutely. So, let's suppress dive deeper into that. Yes. The very first thing, suppress your emotions all the time. गुस्सा आ रहा है, चिल्लाओ, पीटो, फेंको चीजों को, या कुछ मत बोलो, लेकिन उसके बारे में बात मत करो. फर्स्ट ग्रेट टिप फॉर दैट, कि कुछ भी करो, सब कुछ करो, एग्रेसिवली एक्ट करो, डिफेंसिवली एक्ट करो, बट बात मत करो उसके बारे में. वन ऑफ द ग्रेट वेज टू डिस्ट्रॉय मेंटल और इमोशनल हेल्थ. द सेकेंड थिंग वुड बी टू नॉट एक्ट अपॉन व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग और ड्राइविंग दैट पर्टिकुलर इमोशन. कि समझो ही ना क्या हो रहा है आपके साथ, क्यों हो रहा है. डोंट बी इंक्विजिटिव अबाउट योर लाइफ, डोंट बी इंक्विजिटिव अबाउट योर माइंड. जो हो रहा होने दो, जिस तरीके से होना होने दो. Then life and emotions will keep on driving you, and that will again, it will destroy, because वो अपने तरीके से हैंडल करेगी चीज़ों को और वो इम्पैक्ट करता रहेगा आपकी लाइफ को. थर्ड थिंग, डू नॉट वर्क एंड मूव अराउंड योर बॉडी. राइट, आप एक जगह बैठे रहो, कुछ मत करो, आराम से बैठे रहो, बिना बॉडी हिलाए, बिना कुछ वर्कआउट करे. डू नॉट फोकस एंड प्रायोरिटाइज योर फिजिकल हेल्थ एट ऑल. वॉच नेटफ्लिक्स, चिल ऑल डे, रिलैक्स. जिंदगी रिलैक्स करने के लिए बनी है, रिलैक्स अ लॉट.
And drink a lot, yes. Do all the things. Smokes, yeah, drink, smoke, whatever you want to do. Do all those things. Again, a great technique to destroy your emotional health. Right? Great. Okay. So, well, let's really hope people get the point. Yes. And do the opposite of these. Let's hope, and let's hope they don't follow it exactly. Great. Shivam, how do we, so we've talked about anger. How do we let go of things? So small things that happen during the day, they can just, something small can piss you off and then your day is ruined. That's just terrible, right? What a waste. How do you deal with that? How do you let go of things? And let's say even if you've had a fight and someone said sorry, but you're not happy with the sorry or whatever it is, and then you drag it just way too long. Like a monk, I think Buddhist monk said, anger is like holding a burning coal in your hand. The longer you hold it, it'll burn just you and not the other person. Right. So वो लड़ाई तो खत्म हो गई, अगले ने सॉरी बोल दिया है, वो मूव ऑन कर चुके हैं और आपने पकड़ के रखा हुआ है, and it's just destroying you. So how does one deal with that? I think the very important art for that particular thing is not taking things personally. Of course, I mean, काफी relationships ऐसे हो जो personal होते हैं, but still understanding that in most of the cases, in most of the conversations, people are just talking to themselves. In most of the relationships, people are just invested in understanding and fulfilling their needs. And that is not wrong. I'm not saying it's a bad way or as a degraded way. It's a very basic thing to understand. कि जब भी हम किसी से बात कर रहे होते हैं, काफ़ी बार वो अपने हिसाब से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहा है, राइट? एंड दैट विल बी देयर ओन कमिंग फ्रॉम देयर ओन कंडीशनिंग एज वेल, अपने थॉट प्रोसेस के थ्रू निकल के बाहर आ रहा होगा. सो ये इंपॉर्टेंट है समझना कि अगर किसी चीज़ ने आपको ट्रिगर किया है, फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट इट मे नॉट बी अबाउट यू एट ऑल, राइट? आपका बॉस आपको आके चिल्लाना चालू कर रहा है, ऑफ कोर्स इट इज ऑन यू. कहना आसान है कि पर्सनली एक्ट मत करो, बट इट इज हैपनिंग ऑन यू इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल. ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू टेक थिंग्स पर्सनली, बट अंडरस्टैंड कि ये मे बी वॉज नॉट रियली इम्पोज्ड एट यू. It was a byproduct of something else. Maybe his own emotional reactions, maybe his own incapabilities or capabilities or whatever that could be that he is imposing on you. तो सारी चीज़ें कहाँ से इस कान से ड्राइव हो रही है. So understanding अपना रोल इस पर्टिकुलर चीज़ में कि हम कितना चीज़ों को पर्सनली ना ले. Because the moment we take things personally about everything that is happening, कुछ चीज़ों को लेना बहुत मुश्किल है, बट अगर हर चीज़ को पर्सनली लेना सीख जाते हैं तो समवेयर हर छोटी छोटी चीज़ बर्डनिंग लगने लग जाती है. एंड वी मेक इट एवरीथिंग अबाउट आवरसेल्व्स. हमें लगता है कि दुनिया और यूनिवर्स हमारे अराउंड इवॉल्व कर रही है, राइट? फॉर एग्जाम्पल मैंने कैब लिया, मैं कैब लेकर अपने घर जा रहा हूँ और टैक्सी ड्राइवर बात कर रहा है, फ़ोन पे बात कर रहा है पूरे देर. मैंने क्या मीनिंग निकाला इससे कि वो पक्का मुझे कोई अच्छा सवारी नहीं मानता है, और दैट इज़ वाई बिकॉज दिखा कि मैं कहीं अच्छा सा इंसान नहीं दिख रहा हूँ तो इसलिए फ़ोन पे लग गया, राइट? तो मतलब हाउ डेयर यू थिंक अबाउट दिस अबाउट माई सेल्फ, राइट? मैं तो अच्छा खासा, मैं इतना अच्छा कमाता हूँ, मैं इतना अच्छा पैसा कमाता हूँ, हाउ डेयर यू थिंक अबाउट दैट अबाउट मी. अगेन आई मेड इट अबाउट माई सेल्फ हियर, बट इट वॉज नॉट अबाउट मी, इट वॉज अबाउट हिम एंड वॉट ही वॉन्टेड टू डू दैट पर्टिकुलर मोमेंट. सेम थिंग अबाउट द पार्टनर्स. रोमांटिक रिलेशनशिप्स में भी ये होता है कि हम अज्यूम करते हैं कि जो हम सोच रहे हो, जो समझ रहे हैं, वो हमारे पार्टनर भी समझ चाहिए उसी एंगल पे, ऑर्डर पे. इफ़ दे डोंट डू दैट बिकॉज उनकी कंडीशन, उनका बिहेवियर, उनका बिलीफ डिफरेंट है बहुत ज़्यादा, हम जब अज्यूम करेंगे चीज़ों को, अगेन विल ट्राई टू टेक इट पर्सनली. हाउ डेयर यू डू दिस? तुम क्यों कर रहे हो ऐसा, बार बार तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? द मोमेंट टू टेक इट पर्सनली, अगेन वी वांट टू मेक इट अगेन अराउंड सराउंडिंग अराउंड द वर्ल्ड. तो पॉइंट ये हो जाता है कि हम बार बार चीज़ों को अपने अराउंड रिवॉल्व कराना स्टार्ट कर देते हैं, विच बिकम्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज हर एक छोटी चीज़ अंदर बैठ जा रही है. जब एक छोटी चीज़ अंदर बैठ जा रही है तो हर चीज़ का रिजेंटमेंट एडअप हो रहा है. अगर दिन में ऐसा कॉन्वर्सेशन हो रहा है जो आपको थोड़ा इंपैक्ट कर रहा है, वर्सेस दिन में हर कॉन्वर्सेशन इज बिकमिंग अबाउट यू ओनली, और एवरी सिचुएशन इज हैपनिंग जस्ट अबाउट यू, देन नेचुरली यू आर गोइंग टू गेट फ्रस्ट्रेटेड एट द एंड ऑफ द डे. छोटी से छोटी चीज़ आपको बॉदर करेगी कि क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा ही है, एंड वो आपको इवेंचुअली बहुत ही रिजेंटफुल और बहुत ही एंग्री और बहुत ही स्ट्रेसफुल इंसान बना देगा. This then takes us naturally into the relationship and relationship conflict management. बहुत ही corporate-ish sound कर रहा है, but it's very personal and something that every person deals with. Absolutely. You're in relationships everywhere, with colleagues, with friends, with a spouse. So very, there could be bigger issues, right? Someone's cheated on you and something's gone wrong and, you've been betrayed and whatnot. Those are bigger issues, separately to be dealt with separately. But I'm just talking about, stuff that everybody deals with. In relationships, you have points of argument. All the time. And you fundamentally arrive at a decision that you disagree about this. But then those things repeatedly happen, and
they cause more fights, and sometimes you feel that this person just does not understand me, right? And you feel, okay, the only way forward from here is either I get out of this relationship or I agree to whatever they are saying. Yes. Right? Which neither of these really feels like a win for you. Yes. Right? Is there a way to establish a common ground in such a situation where both people feel that they are absolutely right and the other person is just not getting it? Right? They want you to change first and you want them to change first, and there's no common ground. How does one go about dealing with that? Right. So very interesting thing about, again, talking in terms of pure emotional and psychological point of view, we all human beings crave for peace of security. हम सब security seek कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा security में कौन provide कर रहा है? हमारी identity और हमारे belief systems. Right? So if you believe in something and once you're carrying a particular set of identity, that becomes your security. वो security आपको comfort दे रहा है, certainty दे रहा है, and वो आपको confidence दे रहा है अपनी life जीने के लिए. That could be right or that could be wrong. You might be believing in something totally irrational, but that is giving you security. And if that is giving you security, that means वो आपके लिए sensible है, आपके लिए अच्छा है. Now, let's talk about heterosexual relationships specifically. आप किसी दूसरे पर्सन से शादी होती है आपकी, या रिलेशनशिप में जाते हो, that person is of different gender, different conditioning, different set of beliefs, different set of identity, and different set of upbringing. आप साथ में आते हो, स्टार्टिंग में मज़ा, एक्साइटिंग है, हनीमून फेज चल रहा है, यू आर एंजॉइंग एवरी बिट ऑफ इट. वाई सो? बिकॉज स्पार्क है, दैट अट्रैक्शन, दैट अटैचमेंट, दैट लव, एवरीथिंग इज देयर वहाँ पे. तो सब कुछ हम वो चीज़ें को, डिफरेंसेस को पीछे हटाते जा रहे हैं, अभी मैटर नहीं कर रहा है सारी चीज़ें. एवेंचुअली द हनीमून फेज एंड्स बिकॉज यू विल गेट बैक टू द रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ रिलेशनशिप्स एज वेल. वहाँ पे जब आप जाते हो, आप डिफरेंसेस दिखने चालू होते हैं. अब फनी थिंग क्या होता है कि जब आप डिफरेंस को देखते हो, द वेरी बेसिक इंस्टिंक्ट द मोमेंट वी सी अ डिफरेंस इज अ फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म. अगेन हमने एक आइडेंटिटी देखा कि इस पर्टिकुलर चीज़ में आई एम रिएक्टिंग इन अ डिफरेंट वे, और इस चीज़ में यू आर एक्टिंग इन अ वेरी डिफरेंट वे. फॉर एग्जाम्पल, मैं रात को 2 रोटी खाता हूँ. इट्स वेरी सिंपल एग्जाम्पल. आप रात में 3 रोटी खाते हो. अब हम साथ में बैठ रहे हैं यहाँ पर, मैं बोल रहा हूँ क्या बेवकूफ़ इंसान है, 3 रोटी कौन खाता है लाइफ में? पेट तो दो रोटी से बढ़ जाता है. 3 रोटी खाने वाला तो कुछ फालतू 1 रोटी एक्स्ट्रा खा रहा है, वेस्ट कर रहा है पैसे को. वो आप सोच रहे हो 2 रोटी में पेट कैसे भर रहा है इसका, राइट? इंटरेस्टिंगली उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपकी आइडेंटिटी क्या कह रही है कि दिस इज व्हाट डिफाइंस लाइफ, डिनर एंड ईटिंग. दिस इज व्हाट आई थिंक एज वेल. स्टार्टिंग में सिंस वो हमारा सिक्योर स्पेस है, तो जो मेरे डिफरेंस में आएगा, मेरा दिमाग उसको तुरंत रिजेक्ट करेगा, बिकॉज दैट इज नॉट समथिंग विल गिव मी कंफर्ट. एनी डिफरेंस इज नॉट गोइंग टू गिव मी एनी कंफर्ट. तो इंटरेस्टिंगली पॉइंट वहाँ पर ये आएगा कि हम लोग उस चीज़ को डिसोशिएट कर लेंगे, बोलेंगे बेकार चीज़ें कर रहे हैं हम एक दूसरे के लिए. एवेंचुअली हम साथ रहना चालू कर देते हैं, वी बिकम गुड फ्रेंड्स. एक पॉइंट ऐसा आएगा, मे बी आप 2 रोटी खाना स्टार्ट कर दो, मैं 3 रोटी खाना स्टार्ट कर दूँ. वाई सो? बिकॉज अब वहाँ पे हमने सीख लिया, नाउ वी आर कंफर्टेबल विद द डिफरेंस. कंफर्टेबल हो गए बिकॉज हमने अटैक नहीं किया खुद को एक दूसरे के ऊपर. तो हमने एक सेफ स्पेस पे आगे जहाँ पे हमने एक्सपेरिमेंट किया, एंड देन वी स्टार्टेड लर्निंग अबाउट ईच अदर. सेम थिंग हैपेंस इन रिलेशनशिप्स. आप एक डिफरेंस लेकर आते हो, दूसरा पर्सन एक दूसरा आइडियोलॉजी, आइडेंटिटी और सिक्योरिटी स्पेस लेकर आता है, आप दोनों साथ आते हो. द मोमेंट यू कम टुगेदर, अपनी अपनी आइडियोलॉजीज हैं, सब बहुत ही नॉर्मल तरीके से डिफरेंसेस है. आप कहते हो कि ये सही है, वो कहते हैं ये सही है. बट फनीली क्या होता है ना कि हम दोनों एक दूसरे को खुद को प्रूव राइट करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे. द मोमेंट वी स्टार्ट टू प्रूव आवरसेल्व्स राइट इन दैट पर्टिकुलर केस, हम अग्रेसिव हो जाते हैं एट टाइम्स. द मोमेंट वी बिकम अग्रेसिव, वी आर फाइटिंग फॉर दैट पर्टिकुलर आइडेंटिटी. ये मेरे सिक्योर स्पेस है, हाउ डेयर यू क्वेश्चन दिस पर्टिकुलर थिंग. द अदर पर्सन डज द सेम. तो वहाँ पे एक जो कंफर्टेबल स्पेस बना टू अंडरस्टैंड ईच अदर एंड टू एक्सेप्ट कि नहीं मे बी ये हो सकता है, वो हम नहीं वहाँ पर पहुँच पाते. एंड देन वी कीप ऑन फाइटिंग जब तक वो बहुत बड़ा ना बन जाए. तो छोटी इश्यूज बहुत बड़ी बन जाती है. दैट्स व्हाट हैपेंस इन लॉट ऑफ रिलेशनशिप्स. तो ये समझ पाना कि सबसे पहले भी तो अगर हमें डिफरेंसेस दिख रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट होना बहुत नेचुरल बात है, बिकॉज वो आपका ब्रेन इस तरीके से डिजाइंड है कि जब डिफरेंस होगा तो ब्रेन कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेट में जाएगा खुद को सिक्योर फील कराने के लिए. अगेन द सेम थिंग, एम आई सेफ, खुद को रिमाइंड कराना आई एम सेफ. मेरा थॉट प्रोसेस है ना वो. It's fine if she's not feeling the same thing about my ideologies, my thought process. But how do I communicate about this thing to her? And how does she communicate this thing to me? Matters a very important role and plays a very important role here. Agar if she starts to become aggressive, I also start to become aggressive. Result कुछ नहीं आएगा, हम दोनों लड़ते रहेंगे बैठ के. बट हाँ, अगर she starts to become aggressive, I still become very calm and composed, फिर भी सॉर्ट हो जाएगा. या I become very aggressive, she is very calm and composed about certain things, फिर भी वर्कआउट हो जाएगा. बट कुछ कभी कभी ऐसा आता है वो ट्रिगर का भी सबसेट हो जाता है, दोनों के लिए वो ट्रिगर है वो पॉइंट. तो फिर वहाँ पे लड़ाइयाँ चालू होती है. बट दैट अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट एग्जैक्टली आर योर ट्रिगर्स? वंस यू आर अवेयर, यू कैन यूज इट बेटर टू मैनेज इट. कि इस पॉइंट पे लड़ना नहीं है,
वक्त देना खुद को, मे बी बात नहीं कर सकते, मे बी नॉट इन द स्टेट टू टॉक अबाउट इट एट ऑल, कोई बात नहीं, इस पर बात नहीं करेंगे, थोड़ा दिन इसको रिलैक्स होने देते, लेट इट कूल डाउन, इंटेंसिटी कम करते, देन विल डिस्कस इट आउट. So I think talking, communicating from a very assertive point of view really helps to reduce that intensity of conflict. So Shivam, let's do this then. Let's take a specific example. Okay, let me be bold here and share my life out there, and bold or stupid, or both, right? So here's a specific example. You mentioned OCD. My wife, I believe, has OCD. She may not, and I don't know, but about cleanliness, and she's a germaphobe, right? I'm the opposite. And I don't really care about anything. And she's very particular about when you walk in, you've come from outside, the first thing you have to do is, like, of course, slippers outside, wash your hands and this and that, and yahan nahi baithna hai, yahan pe, so until you change your clothes and take a shower and all of that stuff. And for me, like, I dealt with it initially, no problem, like you adjust a little bit here and there. But as life gets busy, I'm the kind of person who, and you know, like how your brain works and how limited your willpower and Absolutely. Thinking is, ability to think also, the cognitive function declines as the day progresses. So the number of decisions you're encountered with in the day also affect that. Of course. Which is why the likes of Zuckerberg and all these guys stick to the same dress code every day, right? वो लोग कपड़े नहीं बदल रहे हैं कि भैया एक black ही रखना है, black shirt है, blue jeans है, and you stick to it, because just so that you don't have to make another decision. Yes. मैं उस लेवल पे लाना चाह रहा हूँ अपनी थिंकिंग को कि भाई I want that level of simplicity where I'm only focusing on what really matters, and it becomes super difficult. And then we fought about it, we've agreed on certain things, and then because it's so inbuilt in her, it keeps coming out again and again. And so then how do I deal with that? It's I find myself at a loss to, like, rectify this situation. Such a silly small little thing, right? But can be a point of conflict. You're right, absolutely. So, yeah, does one see, that's the thing about it. So interestingly, now the thing is that whatever you're doing or whatever you're not doing is a threat actively for her. हमारे लिए वो threat नहीं है, but उनके लिए वो threat है. Now if that is a threat to her, she would want to react on that particular threat, and that's what her brain wants at that particular case. हमें matter नहीं कर रहा है, तो हम actively और freely move कर सकते हैं उस particular चीज़ के लिए. Now when two people come together in a union, in a marriage, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम समझना पड़ेगा उनके साइड के स्टोरी को कि दिस इज़ व्हाट इज़ अ ट्रिगर, बिग ट्रिगर फॉर हर, एंड शी विल ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट आवर्सेल्व्स एज वेल कि ये मेरे लिए क्या मैटर कर रहा है, क्या मैटर नहीं कर रहा है. बट इंटरेस्टिंगली क्या होता है कि जो इंसान एक फ्री स्टेट पे है वर्सेस दूसरा इंसान जो थ्रेटन स्टेट पे है, योर लिबर्टी और योर फ्लेक्सिबिलिटी टू मूव अराउंड इज मोर कंपेयर टू हर. And also on the other way around, आपकी कुछ triggers होंगे, strong triggers, तो you would be more rigid in that particular area and she might be more flexible. तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर मान लो हमारे में कुछ ऐसे differences है जहाँ पे I have the liberty to be more flexible while she would be more rigid in that particular order, so let me be more flexible at first rather than asking her to also come to the middle, because यहाँ 50-50 नहीं हो सकता. राइट, यहाँ पे 70-30 करना पड़ेगा बिकॉज रिजिडिटी उनकी डिफाइंड है उस तरीके से. बट हाँ, जितना सिक्योर इन्वायरमेंट मिलेगा उन्हें इस पर्टिकुलर ऑर्डर पे एंड गिविंग हर अ पर्टिकुलर सिक्योर इन्वायरमेंट टू एक्सपेरिमेंट अराउंड विथ थिंग्स एज वेल, इट वुड ऑल्सो अलाउ टू ग्रो हर eventually in that direction. बट वो ऑल्सो विल कम जहाँ पे वो लड़ नहीं रहे हो उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में. बट ऑफकोर्स इट हैपेंस, आप थक हार के आ रहे हो काम से एंड इवेंचुअली आपको लग रहा है कि यार चैन से बैठना चाहता हूँ बस. अब मैं सोचना नहीं चाहता हूँ यहाँ क्या करना है, कैसे प्लान से करना है. I want to go lift my daughter, और मैं बेड पे वो बैठी हुई है उसको उठाना चाह रहा हूँ, बैठना चाह रहा हूँ, but I can't because इसको टच कर दिया तो ये बदलना पड़ जाएगा. That irritates me. Yeah, absolutely, it happens because आपका भी अपना डेज होगा, ट्रिगर वाले पॉइंट होंगे, राइट. तो अंडरस्टैंडिंग दैट एंड कम्युनिकेटिंग दैट पर्टिकुलर थिंग कि कैसे ये चीज़ें वर्कआउट कर रही है और फाइंडिंग अ मिडवे अराउंड इट, कि जैसे कुछ चीज़ें एक कंप्लीट नो वाली चीज़ हो जाती है कि लेट्स से व्हेन इट कम्स टू योर डॉटर देन शी वुड बी ट्रिगर्ड द मोस्ट, और व्हेन इट कम्स टू द सोफा शी माइट बी लेस ट्रिगर्ड. सो अंडरस्टैंडिंग वो इंटेंसिटी ऑफ ट्रिगर्स कहाँ उस पर्सन के लिए अटैच कर रहे हैं. तो अगर हमें समझ में आया कि इट्स अबाउट द डॉटर, देन आई कैन नॉट टेक एनी रिस्क्स. इट्स बेटर टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग बिकॉज वहाँ पे मेरी फ्लेक्सिबिलिटी फिर भी ज़्यादा है. येस, मुझे पुश करना पड़ेगा खुद को अपने कंफर्ट जोन से आगे, बट दैट इज़ अ राइट थिंग टू डू. बट ये चीज़ को एक बेटर तरीके से पुट आउट करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज द मोमेंट वी डू दैट पर्टिकुलर थिंग, हम थोड़ा उससे बाहर निकलते हैं तो थोड़ा हमारी तरफ से भी अग्रेशन और एंग्जाइटी और स्ट्रेस निकल आता है. बहुत ऑब्वियसली बात है, वी आर ह्यूमन बीइंग्स एट द एंड ऑफ द डे. बट हाँ, अंडरस्टैंडिंग अगर आ भी जाता है तो हाउ क्विकली वी रेक्टिफाई इट, टॉक अबाउट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ऑल्सो आई थिंक द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई मेंशन, गिविंग हर दैट स्पेस टू ग्रो एज वेल, बिकॉज हम ये जिंदगी भर नहीं कर सकते.
टू बी ऑनेस्ट what does it mean giving her the space to grow? दैट मीन्स कि अभी जैसे मान लो शी इज इन रिजिड दिस पर्टिकुलर ग्राउंड, आई एम स्टैंडिंग हियर, आई एम बीइंग फ्लेक्सिबल अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, हम ये चीज़ कर रहे हैं, लेकिन हम ये जिंदगी भर इतना नहीं भाग सकते, थक जाएंगे हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो हमें एक चीज़ अलाउ करना है कि दूसरा पार्टनर ग्रो भी करे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आपकी शादी हुई और आप केयरलेस हो अबाउट क्लीनिनेस, लेट्स से आपको फर्क नहीं पड़ता, आप जैसे भी हो जी लोगे, जैसे मोस्ट ऑफ द गाइज डू। अब योर पार्टनर इज वेरी रिजिड अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग कि इतना होना चाहिए, राइट? अब आप क्या करोगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कि आप चाह रहे हो कि मैं कॉन्स्टेंटली ये करूँ, वो करूँ, ऐसे करूँ, सफाई करूँ, नहीं करूँ, आपके दिमाग में खुद से नहीं आ रहा है वो पर्टिकुलर चीज़, लेकिन शी वांटिंग दैट पर्टिकुलर थिंग। लेकिन अब आप क्या करोगे कि गिविंग इन दैट पर्टिकुलर स्पेस कि दिस इज हाउ आल्सो थिंग्स कैन ऑपरेट। सो पॉइंट इज कि व्हाट शी इज वांटिंग आउट ऑफ क्लीननेस इज गुड एक्चुअली, बट अप टू एन एक्सट्रीम इट इज बैड। एक एक्सट्रीम पे चले जाए ओसीडी वाले लेवल पे तो इट इज बैड बिकॉज आपको इम्पैक्ट कर रहा है, दूसरे को इम्पैक्ट कर रहा है। सो नॉट गिविंग हर द स्पेस टू ऑल्सो एक्सपेरिमेंट अराउंड दैट पर्टिकुलर थिंग, कि हम इनको एक सेफ्टी नेट दे जहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट कर सके, थोड़ा देर उसके साथ रहने का, थोड़ा उस कंफ्यूजन अनसर्टेनिटी के साथ रहने का। सो दैट इज वेयर आवर रोल विल कम इनटू द पिक्चर बाय गिविंग हर दैट स्पेस टू ग्रो अराउंड। कि ओके आपको लग रहा है कि ये सफाई इतनी इंपॉर्टेंट है, जो कि फाइन, आई विल गिव यू दैट स्पेस कि हम सफाई उतना मेंटेन करके रखेंगे, लेकिन हाँ लेट्स ट्राई टू एक्सपेरिमेंट विथ योर थॉट प्रोसेस एज वेल, मैनेजिंग दैट पर्टिकुलर थिंग। आई विल गिव दैट सेफ स्पेस, उसमें आप थोड़ा ऑसिलेट करो ताकि आप भी ग्रो करो, बिकॉज हम जितना ये घूमते फिरते रहेंगे ना तो हम थक जाएंगे और बाद में फ्रस्ट्रेशन वहाँ से भी आती है। तो जितना वो इफ शी इज ऑल्सो बीइंग रिजिड हियर एंड थ्रू टाइम वो यहाँ से यहाँ पहुँच जाए, वो टाइम लगे मे बी 1-2 साल, लेकिन यहाँ से यहाँ पहुँच जाए तो हमारा हार्ड वर्क भी कम हो रहा है और हमें एक होप, रे ऑफ होप भी दिख रहा है। बट अगर वो यहीं पर है और हम यहाँ मूव कर रहे हैं तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। आई एम बीइंग होपलेस नाउ बिकॉज मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा, यू आर नॉट बीइंग रिजिड एट ऑल, फ्लेक्सिबल एट ऑल। सो वो अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो लिबर्टी देना भी जरूरी है। It's amazing. I love the way you've broken this problem down and like dissected different parts of it. And yeah, so that makes me understand that I may because I have more flexibility with it, and I clearly. There's no doubt, like she's more rigid about it, and maybe because it matters for her more. Absolutely. Right now. It matters less for me. मैं कर भी दूंगा तो भी ज़्यादा फर्क नहीं करूँगा तो भी ज़्यादा. It's just that day to day it gets frustrating. But I may have to make the move to come closer. I may have to make a bigger move to resolve this. But at the same time, I should not just keep on doing that because that will accumulate more frustration over time. And we should at the same time work on bringing her closer to this by experimenting with some thought experiments, maybe thought experiments, get her to try different things and consider different things over time. Yeah, absolutely. Yeah, so it's very useful because I mean it's not like communication between us has broken down. So all channels are open. I think as long as communication is open, everything is doable. Yes. Yeah. And constantly reminding yourself also कि she is doing the same thing to me as well in certain areas of life. जहाँ पे हम rigid है, and my wife and my partner is being flexible about certain things. For example, I'm very rigid about money. I don't want to talk about money, how much I'm earning and how much I'm not earning. And she knows कि it's a trigger point for him or trigger point for me. So she does not go there. She knows कि ठीक है नहीं बात करते इस बारे में. तो she is also actually, तो जब रिमाइंडर रहेगा ना दिमाग में कि she is also doing the same thing for me, तो थोड़ा और आसान हो जाता है इस चीज़ को उस तरीके से ले पाना. Wonderful, sir. Love it. Thank you. So Shivam, I want to know from you, we talked about relationships just now. When we wake up in the morning, emotions seem to be all over the place, right? And it looks like there's no control over them, right? And you sometimes wake up just frustrated, angry, and sometimes you wake up very happy and you like look forward to the day. But that seems to be very fluctuating, and it's a terrible thing because it so many days when you're not just not happy, when you just don't wake up happy. It feels like this is going to be that kind of a day. And then that sets the tone and then that's what happens in the day. Is there a way to control this? How does one go about it? जो सुबह जो feel कर रहे हो पूरे दिन पे उसका असर आए या ना आए, how do you fix that? Right. See, I think इसमें भी awareness plays a very, very important role. And setting a routine makes it work in that particular order. फिजिकल लेवल पे हम अपने रूटीन को बहुत पर्टिकुलर तरीके से सेट कर सकते हैं बिकॉज वी आर वेरी कॉन्शियस ऑफ दोज पर्टिकुलर थिंग्स एंड वी हैव बीन टॉट टू बी अवेयर ऑफ दोज पर्टिकुलर थिंग्स कि मुझे भूख लग रही है तो मुझे खाना खाना है, मैं पता है. मुझे नींद आ रही है तो सोना है, मुझे पता है बिकॉज बचपन से सिखाया गया है. मुझे वॉशरूम जाना है तो मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे पता है. आई नो ऑल दो स्मॉल इंट्रिकेट डिटेल्स. बट द मोमेंट इट कम्स टू इमोशनल हेल्थ वी आर क्लूलेस अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग. अब होता क्या ना कि अगर आप सुबह उठते हो एंड आप मैराथन भागने जाते हो 10 किलोमीटर, यू रन अ मैराथन फॉर 10 किलोमीटर्स, यू कम बैक. मैं आपको बोलूँ चलो शॉपिंग करने चलते मॉल में, यू विल हैव द एनर्जी टू गो.
Probably not. Yeah. Probably not. I mean, unless and until it's very I important. was actually stumped by a marathon of 10 kilometers because a marathon is 42 kilometers. So 10 kilometers is 21, not a marathon. 21. is a half marathon. Yeah, huh. So marathon is 42. So anything less than that is Okay. not a marathon. Okay, so what is it called? So it's just a 10k run. 10K run. Okay, we call or it 10K run. Yeah, 10k. It's something to learn. Yeah. Sorry, I'm a runner and I just. Of course. Yeah. It's something good for me to learn as well. Yeah. Okay, right. So anyways, you won't be have the energy to go out the mall with me because Right. of course you Yeah. don't have the required energy to go do that particular thing. Physical energy नहीं है हमारे पास. सेम थिंग हम इमोशनल लेवल पे करते हैं कि आप जब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हो जहाँ पे आप टायर्ड हो, एग्जॉस्टेड हो बिकॉज फिजिकली किसी कारण से, आप मना कर दोगे कि नहीं आज नहीं जा सकते, कल चलते हैं, आज मुझे सोना है, आज मुझे खाना है, मुझे पीना है, वट एवर. यू आर वेरी कॉन्शियस ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग एंड यू वुड नॉट कॉल योरसेल्फ लेजी फॉर दैट ईदर. यू नॉट कॉल योरसेल्फ मूड स्विंगर फॉर दैट एनी पर्टिकुलर रीजन. आप ऐसा नहीं बोलो ठीक है, नॉर्मल है, इसका रिस्पॉन्स है बेसिक तरीके से. द मोमेंट इट कम्स टू इमोशनल हेल्थ, वी स्टार्ट टू कॉल अस एज मूडी, वी स्टार्ट टू कॉल अस एज लेजी, वी स्टार्ट टू कॉल अस एज इमोशनल, सेंसिटिव एंड सो मेनी अदर थिंग्स. हो क्या रहा है, आप रात भर अपने दिमाग का मैराथन दौड़ा रहे हो, ओवर थिंकिंग अबाउट सर्टेन थिंग्स, वेरियस थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें इधर उधर की चीज़ें आप सोच रहे हो बैठ के. यू आर एग्जॉस्टेड, यू आर फटीग्ड बाई ऑल दिस ओवर थिंकिंग. सुबह उठ के वो टायर्डनेस कहीं तो शो अप करेगा आपकी. But Anku, you slept. You're saying if you didn't sleep well. If you didn't sleep well, that or even the things that are out of your control, you're constantly trying to change and control that particular thing. जो हम कहते हैं ना सुबह उठ के मेरा मूड बहुत ऑफ रह रहा है, बहुत आई एम फीलिंग लो, ये रूटीन वाली बात है कि मे बी हमारा जो रूटीन प्रीवियस डे का है, उसके पहले वाले दिन का, रात का भी, नींद वाली बात का भी, हमने इतनी सारी चीज़ें कॉम्प्रेस करके रखा हुआ है और जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में उस पर बहुत पुश करने की कोशिश की है कि हम फंस जा रहे हैं उस पर्टिकुलर लूप में और हमारी एनर्जी बहुत एग्जॉस्ट हो रही है इमोशनल लेवल पे. तो अगले दिन जब सुबह उठ रहे हैं, आई डोंट हैव एनी एनर्जी एट ऑल इमोशनल लेवल पे, सो माई मूड इज डिवेटेड बाय दैट पर्टिकुलर थिंग. सो अंडरस्टैंडिंग दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हो क्या रहा है ना, आप अगर खाना अच्छे से खा रहे हो, पानी अच्छे से पी रहे हो, नींद अच्छे से ले रहे हो, तो देयर इज नो चांस कि यू आर गोइंग टू फील टायर्ड physically. And the same thing goes with emotional energy as well. There is no reason for you to feel emotionally fatigued or tired unless and until you're not making it work more than it should. So कहीं तो कुछ गड़बड़ है. कहीं तो कुछ गड़बड़ है आपके रूटीन में, इमोशनल रूटीन में, मेंटल रूटीन में. वो समझना बहुत ज़रूरी है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, राइट. और अगर हो रहा है कुछ तो गिव इट अ ब्रेक. इधर डोंट कॉल योरसेल्फ लेजी फॉर डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग. अंडरस्टैंड वो कहाँ से आ रहा है, क्या क्या चीज़ें हम ज़्यादा इधर उधर पुश करने की कोशिश कर रहे हैं या कहाँ मैराथन दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं, राइट. एंड सेकेंडली ट्राई टू आइडेंटिफाई कि हम उसको बेटर कैसे कर सकते हैं. ऐसे हम रूटीन में लाते हैं ना चीज़ों को, अच्छा 9 बजे ब्रेकफास्ट करना है, 1 बजे लंच करना है, ये रूटीन है एंड रूटीन वर्क्स फॉर अस, राइट. दैट्स व्हाट गोस फॉर मेंटल रूटीन एज वेल कि मुझे 10 बजे मोबाइल फ़ोन रख देना है, 10:30 बजे सो जाना है, 6 बजे उठना है, 6 बजे वॉक पे जाना है, समथिंग लाइक दैट, ताकि मैं पता है. फॉर एग्जाम्पल आप सुबह उठते हो विथ लो एनर्जी, लेट्स से मान लो. Why is routine helpful? What does it do to us? इट गिव्स आवर ब्रेन दैट सर्टेनिटी एंड कंफर्ट. आप रोज सुबह उठते हो, राइट. Uncertainty से anxiety भी होती है. exactly. So this also to a large Absolutely. extent can take care of anxiety. एब्सोल्युटली. आप जैसे आपको आदत है लेट्स से कि आप एक दिन ब्रेकफास्ट कर रहे हो, एक दिन ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे हो, अगले दिन 12 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हो, अगले दिन सीधे ब्रंच कर रहे हो, अगले दिन से लंच कर रहे हो, अगले दिन से डिनर कर रहे हो. आपकी बॉडी को क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता क्या हो रहा है. हाउ कैन ब्रेन बी अलर्ट अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग. जितना आप उसको हैबिट से बाहर निकालोगे वो कॉन्स्टेंटली अलर्ट स्टेट में रहेगा, राइट. अब जितना वो अलर्ट स्टेट में रहेगा उतने हार्मोन्स फ्लक्चुएट होंगे बिकॉज आपको ब्रेन को और बॉडी को अलर्ट स्टेट में रखने के लिए बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करने पड़ते हैं. जितनी आदत पड़ जाती है उसके बारे में ब्रेन को सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है. इनफैक्ट अगर आप सुबह उठते हो, डू यू इवन थिंक अबाउट योरसेल्फ कि मुझे ब्रश किस हाथ से करना है, सब ऑटोमेटिकली हो रहा है. राइट फ्रॉम पिकिंग अप द ब्रश टू ब्रशिंग आवर कंप्लीट टीथ, वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट इवन वन बिट. सब कुछ हो जा रहा है बिकॉज आदत पड़ चुकी है, रूटीन बन चुका है. और हम सोचते हैं मेहनत भी नहीं लगता, वो चीज़ मेहनत है एक्चुअली में, बट मेहनत नहीं लगता है बिकॉज वी आर यूज टू दैट पर्टिकुलर थिंग. सेम थिंग हम अपनी मान लो फूड ईटिंग हैबिट कर रहे हैं, कभी कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे, कभी टाइम पे कर रहे हैं कभी टाइम पे नहीं कर रहे. हमारे बॉडी को वर्क करने के लिए, माइंड को वर्क करने के लिए बॉडी के हार्मोन्स फ्लक्चुएट होना और बॉडी के बैलेंस करना हार्मोन्स को बहुत ज़रूरी है. अगर हम सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो उस कारण से कुछ इंसुलिन स्पाइक हो रहा है, ग्लूकोज मिल रहा है बॉडी को, उस कारण से ब्रेन भी काम कर रहा है. आपने सुबह दे दिया प्रॉपर तरीके से, सब कुछ खाना पीना, इंसुलिन मिल गया, ग्लूकोज मिल गया, सब कुछ हो गया प्रॉपर तरीके से. अगले दिन अब खा ही नहीं रहे कुछ. हाउ विल द ब्रेन कोप अप, हाउ द बॉडी कोप अप, उससे नहीं पता कुछ भी. तो वो एक्सेस हार्मोन्स रिलीज करेगा जस्ट टू कोप अप विद दैट पर्टिकुलर थिंग. It sees it as an emergency. एग्जैक्टली, इमरजेंसी अलर्ट स्टेट में चला जाएगा. तो दैट इज वेयर रूटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट कीप्स यू इन अ पर्टिकुलर स्टेट. मुझे कम मेहनत करने की जरूरत है. जितना ज़्यादा आपको ब्रेन ऑप्टिमाइज तरीके से काम करना होगा तो उस बहुत सारी चीज़ों को ऑटोमेटेड तरीके से काम करना चाहिए.
एंड वो सारी चीज़ें जितना मिनिमाइज करेंगे उतना हमारा बॉडी एंड ब्रेन अच्छे तरीके से काम करेगा. तो लेट्स से बट स्टिल सोचते हैं कि हम जीरो से एनर्जी से वेकअप कर रहे हैं. अब इफ़ आई एम वेकिंग अप विद जीरो एनर्जी और हमें कुछ काम करना, ऑफिस जाना है बट ताकत ही नहीं बेड से उठने की, हम ऑफिस जाना तो बहुत दूर की बात है. तो रादर देन ट्राइंग टू पुश आवरसेल्व्स टू गो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टेट कि बेड से उठने का मन नहीं कर रहा और मुझे ऑफिस जाना है, रादर देन पुशिंग माई सेल्फ इन दैट पर्टिकुलर ऑर्डर, व्हाट आई विल ट्राई टू डू, आई जस्ट ट्राई टू टेक मिनी स्टेप्स एज इन मैं सुबह उठूंगा, आई जस्ट maybe go out for sit in the balcony for a while, take some fresh breeze of air, थोड़ा बेटर फील होगा. तो now I'm going from 0 to 5 or 10. बहुत अच्छा फील नहीं हो रहा है, मुझे ऑफिस जाने के लिए 100 एनर्जी चाहिए, बट मुझे बाहर बैठ के 5-10 मिल गया एनर्जी. नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल ब्रश माई टीथ, थोड़ा 10 से 15 हो गया. उसके बाद आई विल गो टॉक टू पीपल, माई डॉटर, माई सन, माई वाइफ और समथिंग लाइक दैट. 15 से 20 हुआ. आई विल मेक सम टी फॉर माई सेल्फ, 20 से 25 हुआ. Then I'll go for a walk, 25 से 35 हुआ. Then eventually I bake some breakfast, 35 से 45 हुआ. I'll go take a shower, 45 हुआ. So what I'm doing, I'm trying to add mini doses of energy for myself. And they stack up. They stack up and they help you to go to do the bigger thing that will actually give you more energy. अब ऑफिस जाएंगे तो अच्छा लगेगा, मुझे पता है अच्छा लगेगा, वो ताकत ही नहीं हो जाने की, बिकॉज हम पुश करना चाह रहे दिमाग को 0 से 100 जंप करने के लिए, बट दैट जंप इज सो अनरियलिस्टिक एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. सो बिल्ड दैट पर्टिकुलर बाउंड्री एंड बिल्ड दैट पर्टिकुलर होराइजन अप टू दैट पर्टिकुलर थिंग, ताकि आप वहाँ तक पहुँच सको. सो दैट रियली हेल्प्स अ लॉट. That's amazing. So you do feel that it is important to also take notice of how you're feeling every day when you wake up in the morning? Absolutely, it's very important. ताकि अब पता चले क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या चीज़ें इम्पैक्ट कर रही है, क्या चीज़ें मे बी वो हमें समझाने में भी हेल्प करता है दैट what are the things that is working out for us and what are the things that are not working out for us. I might say that I'm a careless, I'm a freak, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया से, मैं कह सकता हूँ ये चीज़ बहुत आसानी से, बट हर बार अगर मेरी वाइफ से लड़ाई हो रही है रात में सोने से पहले एंड अगले दिन मुझे थोड़ा लो फील हो रहा है, मैं कह रहा हूँ मुझे मैटर नहीं करता, फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं तो बहुत डिटैच इंसान हूँ, मैं कह रहा हूँ लोगों को, बट मुझे फ़र्क पड़ रहा है, मेरा मूड चेंज हो रहा है, मेरा वर्किंग स्टाइल चेंज हो रहा है, मैं मान नहीं रहा हूँ, बट हो रहा है ज़रूर. दैट अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. And if you don't even notice it, then you don't know. Exactly. Then आप emotions को, तो वही बात है कि जो भी आप हो रहा है उसका effect जो है, like even with food, right? Absolutely. You love this food, you hate this food, like let's say broccoli and some healthy food. If you start noticing what happened, how do you feel an hour after eating it, 2 hours after eating it, and when you eat it for a week, how you're feeling, what are the changes that you're feeling? If you start taking a note of those, that's how your preferences, it's a game changer. Preferences over time change, right? They Absolutely. Absolutely. Wonderful. And that goes a long way in changing the behavior and the life. Yes. In turn. Wonderful, sir. Let's talk about you. So, you've been teaching us all of this. Tell us about an incident or an instance where you had to deal with a tough problem and none of your knowledge came in handy at the time, and you like even if you had it, you didn't have access to it. Like you, ab nahi deal kar paye us time pe. Right. It happens in a lot of cases naturally because, like I mentioned, right, jo emotions you are feeling or any other person is feeling, that's what I am feeling as well. The intensity will be the same as well. For example, in a conflicting situation, there would be moments where I would feel the exact same thing of repulsion, maybe through my wife. I'm having certain conflicts with my wife. एंड देन वो रिपल्शन में भी होगा, वो इंटेंसिटी होगा इमोशन का. बट यस, ये एक ज़रूर चीज़ होता है विद अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिस दैट यू एबल टू कम आउट ऑफ इट सूनर. यू डोंट लेट इट स्टे. दैट डेफिनेटली हैपेंस. बट वन इंसिडेंट वी टॉक अबाउट इट. आई रियली सक एट गिविंग इंटरव्यूज एंड देयर इज अ पर्टिकुलर थिंग अबाउट दैट. You have to act in a particular way in giving interviews. Sure. It's a matter of... Not on a podcast though. This is not an interview. Yeah. It's a chat. Yeah, not an interview in the sense professional interviews, job interviews. Okay. जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो you have to be in a particular way. In the sense that means आपको एक दिखाना है अपना कि how am I so important for the company. Right. And it is not all about you. Yeah. Again, like I mentioned before as well. वो चीज़ में I somehow fail all the time. अब तो मेरा मौका नहीं आता बिकॉज आई एम कम्प्लीटली डिफरेंट एंड डिटैच फ्रॉम दैट पर्टिकुलर फैक्टर. बट पहले जितनी बार होता था आई कुड नेवर एस इंटरव्यूज बिकॉज जब ज़रूरत पड़ती थी मुझे दिखाने की उनको क्या ज़रूरत है कि मुझे दिखाना पड़ेगा कि आई हैव टू टेल यू दैट कि प्लीज़ कीप मी एट योर जॉब बिकॉज आई विल बी सो ग्रेटफुल फॉर दीज 5-6 थिंग्स. मुझसे वो नहीं होता. तो मुझसे वो ऑनेस्टी नहीं आती. मेरी ऑनेस्टी आ जाती बाहर कि दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग, मुझे ये करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे मेरा अपना थॉट प्रोसेस है, मैं इतना ही कर सकूंगा, मैं इतना नहीं कर सकूंगा. तो प्रॉपर बिकॉज आई फील इंटरनली कि वो मेरी वैल्यूज़ है, तो आई एम गेटिंग अवे फ्रॉम माई वैल्यूज़. तो समवेयर जो नीड है स्किल वाली वो चीज़, ऑल्दो आई नो दैट इज़ राइट, मुझे जॉब भी चाहिए, बहुत अर्जेंटली जॉब चाहिए, डिस्परेटली जॉब चाहिए, बट समवेयर वो इमोशन जो मेरा वैल्यूज़ कह रहा है इमोशंस वाला, आई एम नॉट एबल टू फाइट दैट पर्टिकुलर थिंग. तो आई थिंक दैट अगेन इज दैट इज़ वेयर आई हैव
failed a lot of times. In fact, there's a funny thing that I once appeared for an interview जहाँ पे 3 लोग आए थे, वैकेंसी एक थी, and imagine who got the job? No one. So that's what the crux of it is. Right. No, fair enough. Wonderful, sir. Thank you for sharing. Please tell us happiness. It's a very fluffy word, happiness and contentment. Naval Ravikant talks about this in a very interesting manner. He says, in life you can chase and achieve anything that you want. You can get it as long as it's one thing. If you focus on multiple things and if you focus on the balance and everything, then you don't get there. Which intuitively sounds correct to me in the sense that when you want to achieve something, if the goal is big, it will require a disproportionate effort from your side. Absolutely. And that will also mean that it takes away from other things that you have to do. For example, being with your family and maybe some mental peace and calm and relaxation time. It does take away from that. But at the same time, the balance is important. Yes. Because if the life is out of balance, and you can't take away, you can't leave certain things completely. For example, if you're focused on work, it must be done. You must work, let's say, 18 hours a day. If that's the need of your life at that time because of the goal you're chasing. If you ignore the family completely, it won't stay. There will be consequences. And all aspects. So if you ignore your health completely, it won't stay. You won't stay in top shape. Absolutely. You will compromise. So is there a way to focus on, put in a massive effort in one area and at the same time deal to a manageable level all the other things that matter? Right. I think like you exactly mentioned, कि कभी बार हमें disproportionate तरीके से effort डालनी पड़ती है. Right. And in that particular area as well, it's very, very important to understand that life, everything that we do in life is a trade-off. We'll have to trade off certain things to gain something else. Yeah. Now, interestingly, what exactly do we trade off and what exactly do we gain out of it? That awareness is very important. Like you exactly mentioned that if I'm chasing money, that is fine. Till the point I'm aware that I'm chasing money and that will require me to lose certain other things. If I'm conscious of this particular thing, my life will be sorted and so will be the life of my loved ones as well, my relationships and my health as well. Because then I will not try to compromise and compensate in certain other areas. तो मैं खुद से भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ, उनको भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ. मैं चेज तो कर रहा हूँ पैसा, बट मैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि नहीं तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो और मैं इतना टाइम दूंगा नहीं दूंगा, बट मैं दे नहीं पा रहा हूँ बिकॉज इंटरनली आ नहीं रहा है. बट इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट टू देम एज वेल कि सॉरी मेरा टाइम 15 घंटे दिन का यहाँ जाएगा और मैं इतना टाइम स्पेंड कर सकता हूँ तुम लोगों के साथ. तो आई एम बीइंग ऑनेस्ट टू देम एंड फॉर माई सेल्फ एज वेल, एंड वो चीज़ एक सॉर्ट ऑफ कंटेंटमेंट लेकर आता है. बट दैट अवेयरनेस इज वेरी ट्रिकी एंड वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड. बट हाउ डू वी विल डू दैट? इट कम्स विद अ सेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग योर सेट ऑफ वैल्यूज. व्हाट एग्जैक्टली ड्राइव्स यू एज अ पर्सन. फॉर एग्जाम्पल, हर इंसान को कुछ ना कुछ वैल्यूज ड्राइव कर रही है. समथिंग इज ड्राइविंग सम पर्टिकुलर पर्सन एंड वी ऑल वांट दैट पर्टिकुलर वैल्यू एट द एंड ऑफ द डे. जब हम वैल्यू से कनेक्टेड रहते हैं अपने, तो वी फील दैट पर्टिकुलर सेंस ऑफ कंटेंटमेंट एज वेल. नाउ इंटरेस्टिंग, लेट्स से दैट वी ऑल वांट मनी, राइट? हम सबको पैसा चाहिए एट द एंड ऑफ द डे किसी ना किसी फॉर्म में, बिकॉज वी ऑल वांट टू सर्वाइव. बट एवरीवन वांट्स मनी फॉर डिफरेंट पर्पसेस एंड रीजंस. समवन वांट्स मनी फॉर पावर, someone wants money for fame, someone wants money for respect, someone wants money for pride, someone wants money with kindness. Let's say I'm a kind person. मुझे पैसा चाहिए बट मैं काइंड इंसान हूँ. मैं ज़्यादा वो सब मैं नहीं पढ़ना चाहता बट मैं काइंड इंसान हूँ. अब ऑन पेपर आई गेट अ जॉब ऑफर जिसमें मुझे 1 करोड़ रुपये सैलरी है. ग्रेट थिंग ऑन पेपर. बट द जॉब प्रोफाइल इज बीइंग रूड टू पीपल ऑल द टाइम. रूड, यू हैव टू स्कोल्ड पीपल, यू हैव टू शाउट एट देम, जो मेरे वैल्यू से बहुत ऑपोजिट है. विल आई बी हैप्पी एंड कंटेंट इन जॉब? Sure not. Right? So ideally, on paper, I've taken a job that is actually very great. Another person might take that job and ace that job, be great in that job. Me, on the other hand, will suck at that job and will not feel happy in the job either. Why? Because my value is not connected to the job. So understanding मेरी values क्या है, and am I choosing that particular spark and that drive based on that values? अगर मैं वही करने लग जाऊँ ना कि जो मेरी values से resonate चीज़ नहीं, उसमें मैं अपना extra trade-off वाला effort लगाऊंगा, तो ना मैं खुश इधर रहूँगा ना उधर रहूँगा. लेकिन अगर मैं वहाँ लगाऊंगा एफर्ट अपना, तो मैं यहाँ भी खुश रहूँगा और इधर भी बैलेंस कर पाऊँगा. सो फॉर एग्जाम्पल, मुझे सर्विस में अच्छा लगता है. आई लाइक सर्विसिंग एंड आई लाइक टू कम टू सर्विस टू पीपल. तो वहाँ पे मुझे पता है, अवेयरनेस है. तो आई एम बीइंग कम्प्लीटली जस्ट टू इट, वेरी ओपन टू इट एंड वेरी अवेयर टू इट एंड वेरी कम्युनिकेटिंग अबाउट दैट एज वेल टू माई पार्टनर, टू माई वाइफ एंड टू माई फैमिली मेम्बर्स. सो दैट इज कमिंग आउट कम्प्लीटली वेरी ब्यूटिफुली वेल. बट इफ इट इज़ नॉट, मैं कन्फ्यूज़ हूँ, मैं जस्टिस करना नहीं चाह रहा, चारों बट हो नहीं पा रहा है. सो समवेयर आई एम कन्फ्यूजिंग माई सेल्फ,
माई वाइफ, माई फैमिली मेम्बर्स एंड ऑल्सो द वर्क आई एम डूइंग. बिकॉज हमें दिख रहा है कि मैं तो काम करूँ, मुझे पैसे नहीं मिल रहे, लोग तो मुझे फ़ायदा उठा रहे हैं. तो आइडियली मैं कह रहा हूँ मैं बहुत काइंड इंसान हूँ, मैं जस्टिस कर रहा हूँ, मैं तो लोगों को हेल्प करना चाह रहा हूँ. बट ऑन द अदर हैंड आई एम ऑल्सो सेइंग कि लोग तो मेरा फ़ायदा उठा रहे हैं. तो देन आई एम एक्चुअली नॉट बीइंग ट्रू टू दैट ईदर. Right? So if you're a kind person, be kind, but be kind to yourself as well. If you're a kind person, be kind, but know where your boundaries are as well. But अगर आप boundaries बना नहीं पा रहे हो, then it is not just kindness. It is coming at your personal cost as well. So that awareness is a very important thing. Amazing. So well put. So I want to talk about transformation. So somebody who's, let's say, in not an ideal place right now in life, their mental and emotional health is not the best, and let's say even the physical health or financial health or whatever kind of health, they want to go away from where they are. Right, and which is where you know, stuff like addictions, and that's a breeding ground for addictions. Yes. Because you want to get away from where you are, but you're not able to, and so you resort to various other things to like numb yourself and various other things, right? So how does transformation really happen? How should one approach it? How should one approach bringing about change in life? I think the very important thing you need to know is, the first thing is patience. That plays a very, very important role, because काफ़ी बार हम ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, बिकॉज हम उस पेन से भागना चाहते हैं. बेसिकली वी नो वी आर इन अ वेरी डिफिकल्ट स्टेज ऑफ लाइफ एंड वी वांट टू जस्ट रन अवे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थिंग. बट रियलिटी वही बात हो गई ना कि आप जिस पॉइंट पे पहुंचे वो एक दिन में नहीं पहुंचे थे. इट्स लाइक द होल वेट थिंग एज वेल. आपको लगता है कि मैं जिम जाऊँ और मैं एक दिन में, एक हफ्ते में सारा वेट लूज कर दूँ. But the weight you have put up is not happening did not happen in one day either. It happened over a course of months, course of years. Now that you are here right now. तो आप उसको एक दिन में नहीं लूज कर सकते. यू हैव टू गिव इट टाइम. तो पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड साथ ही साथ इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वेरी मच इन टच विद द लॉन्ग टर्म गोल दैट यू आर कैरिंग. एंड दैट विल हेल्प यू टू चूज योर शॉर्ट टर्म गोल्स इन दैट पर्टिकुलर ऑर्डर. दैट मीन्स लेट्स से मुझे एप्स बनाना, मुझे 6-pack एप्स बनाने, तो मेरा वो क्लैरिटी है. Now what will happen is that if I have a goal in mind, long term goal in mind, that I'll have to build 6-pack apps. जो मेरा long term goal है, maybe in couple of years or something like that, months में जाकर. अब मेरे सामने दो ऑप्शंस है. पहला ऑप्शन है कि मेरे सामने एक आइसक्रीम ला के रखा जाता है, और एक खाना या नहीं खाना. मेरे पास दो ऑप्शंस है. मुझे दिख रहा है मेरा लॉन्ग टर्म गोल कि अगर मैं आइसक्रीम खाऊंगा तो मेरा लॉन्ग टर्म गोल फिट नहीं होगा, बट आई एम हेल्दी, बट मेरा लॉन्ग टर्म गोल सूट नहीं करेगा. तो मैं कहूँ नहीं, मुझे आइसक्रीम नहीं खाना, आई जस्ट स्किप दिस पर्टिकुलर, आई विल पास इट ऑन. Right? So this is one thing. This is one way to go about it. Because I was driven by that long-term goal, तो मैंने अपने short-term behavior को और action को choose किया accordingly. But let's say that I'm very healthy. कुछ प्रॉब्लम नहीं है मेरी लाइफ में, बॉडी में सब कुछ अच्छा है. तो अब मेरे सामने आइसक्रीम लेकर आते हो, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आई एम हेल्दी, आई एम फिट, आई विल ईट द आइसक्रीम. क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता. Why so? Because कोई long-term goal ड्राइव नहीं कर रहा है मुझे. So what is happening is that once we are very conscious and aware of the long-term goal, it helps us to choose our short-term actions and behaviors accordingly. But once we have no long-term goals, then हम short-term actions and behavior सिर्फ उस instant kick के ऊपर लेते हैं कि मुझे आइसक्रीम खाना है, अच्छा लगेगा, सिंपल सी बात है. तो अभी हमने दो चीज़ें चूज़ की. पहले केस में क्या था, मेरे पास दो ऑप्शंस थे, अभी अच्छा फील करना या बाद में अच्छा फील करना. हमने बाद वाला चूज़ किया बिकॉज मुझे दिख रहा था, वो एक रियलिस्टिक वैल्यू दिख रहा था. तो सेम चीज़, इफ यू वांट टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ, आस्क योरसेल्फ व्हाई डू यू रियली वांट टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ. किसके लिए कर रहे हो आप ये, एंड इससे क्या होगा आपकी लाइफ में. अनलेस एंड अनटिल यू डोंट हैव द आंसर टू दिस क्वेश्चंस, तो मे बी आप करना नहीं चाहते इतनी स्ट्रांगली उस चीज़ को. और मे बी चांसेस है कि आप छोटे छोटे जो इंस्टेंट लाइफ में आते हैं, छोटे छोटे मोमेंट्स जहाँ पे आप डाइवर्ट कर जाओगे, डिविएट कर जाओगे, वो आएंगे और आप वहाँ से डिविएट कर जाओगे जब मोटिवेशन खत्म होगा. तो नो व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग. मुझे वेट लूज करना है, लेट्स से. क्यों वेट लूज करना है? बिकॉज आई नो फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट दैट माई फादर हैड, लेट्स से, उनका हार्ट इश्यूज था. मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं भी उस लाइन पे जाऊँ. तो दैट इज़ वाई आई वांट टू वर्क ऑन माई वेट. फेयर इनफ, मुझे गोल दिख रहा है लॉन्ग टर्म कि मुझे बाय द एंड ऑफ 50-60 हेल्दी रहना है. माई हार्ट हैज़ टू बी हेल्दी. गोल है, अब 50 साल का गोल है, अभी 2 दिन में नहीं फुलफिल होने वाला. बट नाउ आई कैन चूज एवरी शॉर्ट टर्म एक्शन दैट ऑर्डर. आई हैव टू स्टे हेल्दी. तो ट्रांसफॉर्मेशन हैपन्स विथ वाई. नो योर वाई, क्या आपका वाई है, एंड दैट हेल्प्स यू टू चूज योर बिहेवियर्स एंड एक्शंस अकॉर्डिंगली. Great, sir. So I have a question about this. You mentioned patience. How does one develop patience? How does one build it? Because you're unhappy inside your body, you're unhappy with your life, and you want to get out of this quickly. What can one do to develop patience there? Right. I think ये भी practice की बात है. The whole practice and that whole awareness thing comes into the picture. Would you say acceptance plays a role somewhere in this? Absolutely. Acceptance and taking ownership of your life. कि जैसे मैंने बोला ना कि अगर मेरा वेट आज इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच चुका है, तो मुझे एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि ये मैजिकली नहीं आया था ये वेट. इट वॉज अ कोर्स ऑफ माई एक्शंस एज वेल. ये मेरे कारण ही हुआ है. तो एक्सेप्टेंस भी जरूरी कि ठीक है, हो गया सो हो गया. गलत हुआ, सही हुआ, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. बट हो गया बिकॉज ऑफ माई ओन एक्शंस.
और वो एक्सेप्टेंस इज ज़रूरी, ताकि मैं अगला सेट ऑफ एक्शन चूज कर सकूं. बिकॉज अगर मेरे दिमाग में थॉट प्रोसेस है ना कि मैंने 1 साल बहुत अनहेल्दी खाना खाया तो आई रीच्ड हियर, तो मुझे वक्त लगेगा, एटलीस्ट 6 मंथ तो लगेंगे एक नॉर्मल स्टेट पे पहुंचने के लिए. बट द मोमेंट ऐसे कि मेरी लाइफ बहुत घटिया है, मेरी लाइफ बहुत खराब है, बट आई एम नॉट टेकिंग ओनरशिप कि मैंने क्या किया था 1 साल तक पिछले, तो मैं समवेयर आई एम नॉट एक्सेप्टेड माई ओन सेट ऑफ एक्शंस. आई एम टेलिंग माई सेल्फ मेरी लाइफ खराब है. क्यों खराब है? मेरे कुछ लेना देना नहीं, बस लाइफ खराब है. तो आई हैव नो एक्सेप्टेंस. लाइक यू मेंशन्ड, यस, एक्सेप्टेंस प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि हम यहाँ पर क्यों खड़े, तो वो ऑटोमेटिकली पेशेंस को ब्रीड करता है फिर. I recently went for Vipassana meditation again, and what they teach is when you're trying to focus on your breath and your mind wanders either in the past or the future, the moment you notice that it's gone away, accept that it went away. इस क्षण की जो सच्चाई है आप उसको स्वीकार करो बस, and then bring it back. Bring your focus back on the breath. That's all. Don't create stories around it. Don't feel bad for doing this. Don't feel like shitty about yourself or anything. Yes. Okay, oh, why am I losing? Don't worry about it. Don't feel bad about this. Don't create a story. Just focus on bringing it back every time it goes away. So similarly, if you focus on what the action that you need to take, rather than creating stories around it and labeling yourself as a bad person and all of that, I think just taking action towards what you need to do is better. Absolutely. The stories we tell ourselves has a very important role to play. Yeah, absolutely, sir. The second part of the question was actually around the transformation bit when you said you have clarity on your future goals. People make goals all the time, especially around the New Year's. You make a goal, and let's say you have absolute clarity. You've taken a whiteboard, drilled it down. This is why it matters to me, and it's my own goal, not given by anybody. But when you do it day to day, and like I said, you wake up certain days not feeling like it. Are there any anchors or tools that we can use to stay on track? Because people don't struggle with setting goals. People struggle with staying on course. True. Right? We go off all the time. Right. What are some of the tools that people can possibly use? Right. So basically, a smart goal setting or that you might have heard as well is smart goal setting, and a lot of people. Yeah. So basically, talks about specific, measurable, attainable, realistic, and timely goals. जब अपने goals बनाओ तो make it specific, measurable, attainable, realistic, and timely. Right. Which means आपको पता होना चाहिए क्या कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो. वो उसको हमें ब्रेक डाउन करना है छोटे छोटे मोमेंट्स में. फॉर एग्जाम्पल, मेरा 1 वीक का गोल है, मुझे 5 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं. तो अब 5 चैप्टर 1 वीक में कंप्लीट करने हैं. मेरे दिमाग मेरे साथ ट्रिक्स प्ले कर सकता है. वीक स्टार्ट हुआ आज, मेरा दिमाग कहेगा अभी 5 दिन पड़े हुए ना, 6 दिन पड़े हुए, कल कर लेंगे, बिकॉज मेरे पास स्कोप है उस चीज़ का. बट इफ आई ब्रोकन दैट लॉन्ग टर्म गोल इनटू शॉर्ट टर्म गोल, आज मुझे 1 चैप्टर कंप्लीट करना है, तो अब हमने स्कोप हटा दिया 5 दिन में 6 चैप्टर वाला. अब हमने आज का गोल दे दिया, उसको भी हमने मिनी चंक्स में डाल दिया है. इस घंटे मेरा आधा चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए. So now I'm breaking down all the bigger goals into smaller chunks as well. That is what gives us that brain, that clarity of thought कि ये मुझे करना है. Because see, like I mentioned, the brain cares about comfort. तो जब आप ब्रेन को मौका दोगे एक्सक्यूज ढूंढने का ना, वो बहुत अच्छे से ढूंढ लेगा. ब्रेन लव्स दैट, बिकॉज उसको तो मौका मिल रहा है ना रेस्ट करने का, रिलैक्स करने का. तो जब उसे मौका दोगे एक्सक्यूज ढूंढने का, वो ढूंढ लेगा. डोंट गिव योर ब्रेन दैट मौका टू फाइंड एक्सक्यूज. जब एक्सक्यूज मिलेगा ही नहीं तो वो कर नहीं पाएगा, उसे करना पड़ेगा. वो कर लेगा, आप कर लोगे, आपको जो करना वो कर लोगे. एक्सक्यूज ना मिले तो एक्सक्यूज हम खुद बना रहे हैं, बिकॉज वो हमें कंफर्ट दे रहा है. एंड कोई गलती बात नहीं, एवरीवन डज दैट, बिकॉज हम ब्रेन विल ऑलवेज गो टुवर्ड्स दैट कंफर्ट स्टेट, ऑलवेज, नो मैटर वेयर यू आर. जितना हम उसको मिनिमाइज करते जाते खो जाते. वही बात है कि सैलरी मुझे चाहिए ही चाहिए एट द एंड, बिकॉज मुझे खर्चे चलाने हैं. तो अब करना पड़ रहा है जॉब, मन तो छोड़ देना, क्या आपको कौन सी बड़ी बात हो गई, आई लिव द जॉब. बट खर्चे है, EMIs है, आई डोंट हैव अ वे आउट, तो करना पड़ रहा है जॉब. So that's the same way out. Super, sir. I want to end this conversation with a specific takeaway for people. So in nutrition, in fact, everything in health as well, you have to do micro workouts through the day, or micro decisions that you make about your nutrition choices as well. Something that does not take too much of a toll for you, but maybe 20 push-ups and stuff like that you do throughout the day, and you stay active. Are there any emotional health workouts that one can do every single day, which does not take much time, much effort? It does not feel like too burdensome, but compounds over time and gives you sorts out, keeps your emotional health in check. Right. Make a list of your energy givers, energy suckers on an emotional level. Okay. जैसे आप when you go out of work, physical level पे, your energy every day, physical energy is dissipated a lot of places, in a lot of areas, in a lot of things.
You go out for work, you're driving, your energy is invested. You go out for a run, your energy is invested. You're talking to people, your energy is invested. You're working out, even watching Netflix, your energy is invested physically. Yeah. But what do you do to replenish that? You eat food, you sleep, you drink water. So those are your energy givers, physical level. And there are certain things which are exhausting your energy as well. Yeah. But we're so much alert and very conscious about these particular things that we know for a matter of fact that in दिनों में इतना मुझे balance करके चलना है कि by the time we reach 9 a.m. I'll take my breakfast खुद से. Yeah. So I replenish my energy all the time without any cause. The same we don't do for emotional energies. So what we do, let's say 10 things all at once that are energy suckers for us. And we do just one thing that energy giver. And the more those energy suckers compound, they make our life more threatening and more exhausting and more fatigued. So understand what are your energy givers and suckers. Try to keep a balance of those particular things. Know that, okay, these are the 10 energy givers that I have. That could be talking to my wife, talking to my partner, going out for walk, maybe watching an Instagram meme, or writing, maybe writing, journal, whatever is that. Whatever, you have to figure out that for yourself. What are my energy givers? I need to maybe make sure that I'm doing that every day. What are my energy suckers? Try to reduce the intensity of those things every day. Even if it is done consciously. For example, overthinking is my energy sucker. Yeah. I'll try to reduce that somehow through certain ways. Yeah. Talking to a particular person, trying to explain them what is right, what is not, is my biggest energy sucker. I'll try to reduce that as well. Yeah. So trying to understand what are my energy givers and suckers and trying to minimize and bridge that particular gap, it will leave you for more energy every day. And once you have more energy every day, you'll do the things automatically because it's coming naturally to you now. So obviously you'll do more things and a lot of things will compound and it will give you great results. Wonderful, sir. What a conversation. I've loved it. Yes, loved every bit of it. Thank you so much for doing this and thank you for making time. Now, before I let you, please tell people where they can find you. Yeah. You can find me on Shivam Now, SHIVAMNOW, and all the platforms. On all the platforms, yes, it's the same. Yeah. Wonderful. You've also written a book. What's your book about? What's it called? And where can people find it? There are two books. The first book is How to Unleash Your True Potential. And the second one is Finding the Magic in You. Both are available on Amazon, Flipkart, and different places. And just the titles are just so incredible. I didn't have the time to get them, but I shall now. Now that I would love to have a review. Wonderful, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you so much for having me. Cheers.